एकत्रित हुए हो यहाँ और आज पहली बार ऐसा माहौल बने हैं कि हमारे राजकीय गीत में अतिक सुंदर माहौल बना थे जिला देखे पर मोर आदि का बिल्कुल डबडबा गए है और ये जो दृश्य है ना वो जिंदगी भर मोर दिल में और आप मन के दिल में भी समाहित रहेंगे। संगवारियों में परफॉर्मर में स्टेज पर आ चुके हैं और हम सभी मिलकर छत्तीसगढ़ मतारी के मदिना प्रधान अरबा पैरी के साथ छत्तीसगढ़
घनघाटा छत्तीसगढ़ सिने अवार्ड, स्टार्टअप सिने अवार्ड की जो मैगजीन है उसका विमोचन हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं। जो पत्रिका का हमने यहाँ अभी विमोचन किया है, इसमें छत्तीसगढ़ी फिल्मों की सारी चीजों का समावेश है। इसमें छत्तीसगढ़ी फिल्मों की सारी जानकारियां हैं और अच्छे अच्छे लेख हैं। जो वरिष्ठ पत्रकार गण हैं उन्होंने इस पत्रिका में अपने लेख लिखे हैं। और अनुपम वर्मा जी जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, कविता लिखते हैं, लेखक हैं, उन्होंने इस पत्रिका का संकलन और संपादन किया है। मैं चाहता हूँ अनुपम वर्मा जी अगर कहीं हो तो आ जाए। अनुपम वर्मा जी, मैं आदरणीय कलीराम जी से आग्रह करूंगा मंच में है। आदरणीय कलीराम जी, मैं योगेश जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि विद्वान भैया का से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से माननीय विद्वान भैया जी का स्वागत है। रंग झांझर स्टार अवार्ड्स, छत्तीसगढ़ी फिल्म स्टार अवार्ड्स 2023 में जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब बारी है उस क्षण के जेकर हम सब लास्ट इस सबरी से इंतजार है। शुरुआत हो गए, वंदना हो गए, लेकिन जिस मेन उद्देश्य से हम यहाँ एकत्रित हुए अब बारी है उसको। तो आइए हम सब मिलकर अपन अवार्ड के शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ मैं नुपुरला आग्रह करूँ कि कार्यक्रम ला आगे बढ़े। और ये जिक्र है हम सब यहाँ पर आए हैं अवार्ड के लिए। अब हमारे आर्टिस्ट वाला अवार्ड से हमें यहाँ पर सम्मानित करो और हमारे सबो पहुना स्टेज पर है जीवन हमारा आर्टिस्ट वाला अवार्ड यहाँ देगी। और सबसे पहले कैटेगरी है हमारे अवार्ड के बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट फेज 1 अवार्ड की और हमारे चलत है बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट गर्ल हमारे पहली अवार्ड की कैटेगरी है। और उनके नॉमिनी हरी इसी के साथ हमारा फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट गर्ल। हमारे नॉमिनीज है आराध्या साहू फॉर द फिल्म कुरुक्षेत्र। और हमारा सेकेंड नॉमिनी है मैं हाँ अपन गेस्ट से अनुरोध करता हूँ कि वो विनर्स के नाम अनाउंस करें। हमारे कैटेगरी के विनर के नाम ला घोषित खबर पहुना मन करी। और सबसे पहले कैटेगरी है बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट गर्ल। उनका नॉमिनी आपने दे रखे हो आराध्या साहू।
आवाज नहीं आवे थे दोस्तों थोड़ा जोर से आवाज से जोरदार यहाँ बताऊं तो मजा आई और लिफाफा यहाँ आ चुके हैं देखन कौन है हमारे बेस्ट आर्टिस्ट गर्ल के विनर यहाँ बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट गर्ल सानवी सुंदरानी पिक्चर मजनू चाइल्ड आर्टिस्ट का तालियां बजाकर स्वागत करें अभिनंदन करें ऐसा है उसके दादा आ गए उसको लेने के लिए दादा से सबसे ज्यादा प्यार होता है चलो बताइए और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट बॉय ओकर नॉमिनी है सक्षम शर्मा फॉर द फिल्म लव लेटर सक्षम शर्मा नेक्स्ट नॉमिनी है विष्णु पाटणकर फॉर द फिल्म हमारे नॉमिनीज सक्षम शर्मा और विष्णु पाटणकर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट बॉय विशु पाटणकर कुरुक्षेत्र संगवारी आप अपनी तालियां चाहो हर अवार्ड में हमारे विनर नंबर तालियां आप सभी की बहुत जरूरी है तो तालियां हर अवार्ड में आप उनका जाओ जोरदार जोरदार तालियां हो जाए विष्णु पाटणकर एक बाद हमारे नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर जेकर नॉमिनी है भवानी नाम ये हमारी रिक्वेस्ट है आप मन से यहाँ बैठे सभी सामान्य जन से कि प्लीज जब अवार्ड अनाउंस होते तब कलाकार की सबसे बड़ा हौसला अफजाई यही होती है अगर अवार्ड पहला अवार्ड यही होते हैं जोरदार ताली बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर सरिता जैन जलहट कौन देंगे हमारे कुलदीप गुजरा जी हैं, राजीव आसमानी जी हैं, हमारे मित्र
भैया से पकड़ो, हाथ दो क्या लेस मेरे को पकड़ा दिया हूँ क्या संगवारियों, आप देखें कौन है हमारे बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट के विनर। बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट तारिणी दुबे, चल हट दोनों देख लीजिए। संगवारी मन की जोरदार तालियां चाहो। So ladies and gentlemen, we have special guest present among us here. आप सभी की जोरदार तालियां हम उनके लिए चाहेंगे क्योंकि बड़ी दूर से वो हमारे बीच में आए हैं। बिगेस्ट डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड दीपक आनंद जी हमारे बीच में मौजूद है। हमारे राज्य में वो यहाँ आए तो हम सभी जोरदार तालियों के साथ उनका यहाँ पर स्वागत करेंगे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री की ओर से। और इनके बारे में आप सभी को बताना चाहेंगे, असिस्टेंट रह चुके देवानंद जी के, विजयानंद जी के, और डायरेक्टर है बहुत बड़े सुनील शेट्टी जी को इन्होंने लॉन्च किया। और इतनी सारी उपलब्धि में इनकी बता रही हूँ, आप सभी की तालियां नहीं आ रही, जोरदार तालियां देवानंद जी के लिए होकर राजेश जी ने स्वागत किया है सभी राज्य की तरफ। बेनेडिक्ट फ्रांसिस, नवा बिहार। नवा बिहान के बेनेडिक्ट फ्रांसिस, बेस्ट आर्ट डायरेक्टर फिल्म नवा बिहान। तो यह उस फिल्म से नवा बिहार की टीम से अगर कोई मौजूद है तो बोला हमें स्टेज पर इनवाइट करना चाहते हैं। नवा बिहार की टीम एक बार जोरदार तालियां आप सबसे हो जाए। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। छत्तीसगढ़ की धरती पर नवा बिहार लोक खंजर सीनियर आर्टिस्ट के इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में मैं सभी छत्तीसगढ़ के कलाकार, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों से लेकर बड़े तक एक्टिंग के फील्ड में, डायरेक्टिंग के फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। पुरस्कार तो कुछ लोगों को ही मिलता है, परंतु जो पार्टिसिपेट करता है उसी को पुरस्कार मिलता है। इसके पुरस्कार जिनको नहीं मिल रहा तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर हम कोशिश करते रहेंगे, अपनी फील्ड में काम करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन हम पुरस्कार के भी भागीदार बनेंगे। और इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ के नवोदित कलाकारों को घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। और ऐसा स्टेज जिसमें
वाले कलाकारों को, एक्टर को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, मेकअप मैन को, इनको पुरस्कृत करने का काम करके छत्तीसगढ़ में छालीवुड के क्षेत्र में हम बॉलीवुड का कंपटीशन करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और योगेश अग्रवाल जी और उनकी राजेश मिश्रा जी और उनकी टीम जिन्होंने आयोजन किया है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि आज के समय पर शॉर्टकट से भी पुरस्कार मिलता है, परंतु जिस दिन फेयर तरीके से हमारे कलाकारों को पुरस्कार मिलेगा, उस दिन से निश्चित रूप से पुरस्कारों का भी सम्मान मिलेगा, बढ़ेगा, और कलाकारों का भी सम्मान बढ़ेगा। मेरी इस आयोजन के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है आज कोई भी भाषण सुनने नहीं आया, आज सब लोग फिल्म फेयर अवार्ड लेने के लिए, उसको देखने के लिए, कलाकारों की प्रस्तुति देखने के लिए आए हैं। मंच पर हमारे बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्टर, कलाकार ये सब खड़े हैं। मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और हम छत्तीसगढ़ महतारी का मान पूरे देश और दुनिया में बढ़ाएं, यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। 2 मिनट के भाषण सुनोगे? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्थान ग्रहण कर सकते हैं। इधर भट्टी भाई,
हमारे बेस्ट सिंगर मेल गोज टू तोशांत कुमार फ्रॉम मुंबई। Audience House of प्रोडक्शन हाउस है सी म्यूजिक सीजी। आप जम्मू सदवारी में की तालियां हम चाहो हमें बेस्ट सिंगर मेल जिगर विनर इन तोशांत कुमार सॉन्ग के नाम मोनी और हम प्रोडक्शन हाउस है जी। अपने गाने के बारे में बताएं। सबसे पहले तो जितने भी आयोजन कमेटी में हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा आयोजन किया आपने। जो अभी तक मैंने जितने अवार्ड फंक्शन देखे हैं मुझे ये अवार्ड फंक्शन बहुत अलग अलग है और ऐसा और अच्छे से होना चाहिए अगले साल। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और योगेश भैया और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात तो मोहनी के बारे में बता दूँ कि मोहनी हमारे लिए सपने सपने सच होने के बराबर है। छत्तीसगढ़ी बोलो ज़्यादा अच्छा है। मोहनी जो गाना है वो में हमारे मन के इमोशन जुड़े थे, छत्तीसगढ़ के इमोशन जुड़े थे। और आप मन जानते हो कि मोहनी गाना आज छत्तीसगढ़ में नहीं पूरा भारत देश के बाहर तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बांग्लादेश में बहुत वायरल है। और ये सब आप मन के माया प्यार दुलार के कारण से है। और आप मैं यही सोचत रहा हूँ कि मोहनी के व्यू करना चाहिए अभी करके। तो एक साल में सबसे ज़्यादा व्यू वाले गाने 138 मिलियन हो गए अभी, 138 मिलियन। और आप मला बता दिए हम खुशी होती है कि मोहनी गाना छत्तीसगढ़ में यूट्यूब में सबसे ज़्यादा व्यू जाने वाले गाना बनने वाला है। बस 1 मिलियन लोग बचे। एक गाना है जो है व्यू ज़्यादा है 140 मिलियन है। मोहनी अगर आज 140 मिलियन होने वाला है तो 1 मिलियन बचे। आप मन के प्यार हुई तो वो एक सप्ताह में 1 मिलियन क्रॉस कर जाए। धन्यवाद। जय जवान जय छत्तीसगढ़। ऑडियंस ये थे हमारे विनर तोशांत कुमार बेस्ट सिंगर मेल। अब आगे बढ़कर बेस्ट सिंगर फीमेल की बारी है और एक और नॉमिनी है मोनिका वर्मा सॉन्ग मोहिनी, गीतिका देवदास सॉन्ग लिख रही हूँ, चंपा निषाद, माया माथुर, श्रद्धा मंडल, माया देवी, माया ले, श्रद्धा महिमा दास, सुनमुड़ संगीत। तो ऑडियंस का लक्ष्य आपका कौन हुई विनर? हमारा बेस्ट सिंगर फीमेल के मोनिका वर्मा और प्रोडक्शन हाउस है जी म्यूजिक सीजी। तो जोरदार ताली। मोनिका से मैंने कहा कि कुछ बोलना है, बोले ठीक है गाना भी है। तो 2 लाइन ठीक अशोक तिवारी जी की डिमांड है। वैसे जब मैंने पहली बार मोनिका जी को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि छत्तीसगढ़ में ये लता जी की आवाज़ कहाँ से आई। ऐसा लगता है कि स्वर कोकिला लता जी की आवाज़, मोनिका जी की आवाज़ हम बराबर, ये हमारे छत्तीसगढ़ के स्वर कोकिला है। सबसे पहले तो रंगझांझर की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी छत्तीसगढ़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे मोहनी गीत को इतना पसंद किया, इतना अप्रिशिएट किया। और थैंक यू सर। मैं रंगझांझर से आपको बता देती हूँ, बहुत पहले से जुड़ी हूँ। 2016 में आपने एक सिंगिंग शो किया था, तब मैंने पार्टिसिपेट किया था और आज उसके बाद मैं यहाँ पे आ रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर, आप लोग का आदेश होगा मैं बोल सकता हूँ। मेरा गला थोड़ा खराब है, गलती हुई तो क्षमा करेंगे। बड़ी बड़ी
मैं अभी बात चली त्योहार की तो मुझे याद आ गया कि 2000 में सीसीएन अभी तक जब मेरा चैनल चलता था, शायद मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का पहला अवार्ड पावर नाइट मैंने किया था। और ये विनोद भैया और योगेश भैया, मैं जिसे याद कर रहा हूँ कि 20 साल पहले जो पहला अवार्ड नाइट मैंने किया था रायपुर में पावर नाइट, नकुल उधर बैठे को मालूम है, रजनीश भी है, बरसते पानी में विनोद भैया वहाँ पर आए थे, क्या मेरा कार्यक्रम था, उससे लाइव प्रोग्राम चल रहा था। तो ये विनोद भैया और योगेश भैया का मतलब इस परिवार का जो वो है विवेशन है छत्तीसगढ़ी के कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए मैं आज वो बात मुझे याद आ गई। तो मैं विनोद भैया का आप लोगों का और आप पूरी टीम को फिर से एक बार बधाई दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप इसी तरह से सदा लगे रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, अभिलाष थैंक यू। अब वो बढ़ते ना आगे की ओर हमारा अवार्ड कैटेगरी है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और उनका नॉमिनी है नवीन साहू वाराणसी, परवेज खान तय कहानी बंजारानी, डीजे अश्विन तय ना बोले, दिलीप षडंगी फूल गजरा और डीजे अश्विन मोहिनी। ये अवार्ड्स का दे बात मैं अनुरोध करूँ। एक चेंज है, तीजन दीदी जा रही है तो हम चाहते हैं आदरणीय बिल्कुल भैया से कि तीजन दीदी का जो सम्मान चित्र है उन्हें उन्हीं के स्थान पे दे दें। मैं सम्मान चित्र अंदर से बनवाता हूँ और इस अवार्ड को देने के लिए अमित साहू जी से आग्रह करूँगा मंच पे आए, उत्तम तिवारी जी से आग्रह करूँगा मंच पे आए और के यादव जी मंच पे आए और नहीं जाएगा, सामने आएगा। नेक्स्ट अवार्ड के लिए जो गेस्ट हमारे बीच आ रहे हैं उत्तम तिवारी जी, कुमेश जैन जी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू जी, मैं उनको भी मंच पे आमंत्रित करता हूँ वो आए और मैं सभी का और लोगों के आगे भी कर रही हूँ। हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और नॉमिनीज है नवीन साहू वाराणसी, परवेज खान तय कहानी बंजारानी, डीजे अश्विन तय ना बोले, दिलीप षडंगी फूल गजरा, डीजे अश्विन मोहिनी।
और बेस्ट आर्ट डायरेक्टर के विनर हैं जीत कुठारी, सुन और संगीत। और इस तालियां बजाने में कंजूसी ना करो, जितने कलाकार स्टेज पर आए बोला और इसी मीठी मीठी तालियां जाए करें। जीत कोठारी होकर संगीता क्या बात है। एक साथ हमारे बेस्ट सिनेमेटोग्राफर की ओर बढ़त और ओपन नॉमिनी है तरुण साहू बारामासी, पुष्कर साहू मोहिनी, अनुराग निर्मलकर फागुन 2, मनमोहन तिवारी फूल गजरा, विप्लव शाह तय कहानी बंजारा। और विनर है बेस्ट सिनेमेटोग्राफर मिस्टर अनुराग निर्मलकर और फागुन 2 स्टूडियो। गाना गाना बधाई हो, अनुराग जी हो, जोरदार ताली संगीत। नेक्स्ट कैटेगरी में बेस्ट एक्टर में ओपन नॉमिनी है रोनित रॉय फागुन 2, दीपक साहू मोहिनी, जागीश वर्मा तय कहानी बंजारानी, नितिन देशमुख कौन जरी, हिमांशु वर्मा बारामासी। और एक विनर है बेस्ट एक्टर में दीपक साहू मोहिनी। आज मैं राकेश मोहिनी की टीम और सब अवार्ड में लेकर जा रही। जोरदार तालियां हो जाए हमारे विनर बेस्ट एक्टर मेल दीपक साहू मोहिनी। और इधर प्रोडक्शन हाउस से जी म्यूजिक। मैं चाहूँ कि दीपक म्यूजिकल एल्बम अवार्ड में बेस्ट एक्टर के अवार्ड जीतेंगे, तो वो उनका क्या भावना है अवार्ड के म्यूजिक के साथ है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दिया आप सबको कि यहाँ इनवाइट करे हो और इतना सुंदर प्रोग्राम आयोजित हो रहे। मैं बैठे हुआ शुभम भाई साथ तो वही मतलब याद है कि बहुत सुंदर आयोजन हुए। तो पर आप मैंने सबसे पहले धन्यवाद कि हमारे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री अब ऐसे लगा भी कि नहीं अब जाने वाला है बहुत आगे। तो अगर सबसे पहले योगेश भैया और पूरी टीम पर बहुत सारा ताली हो जाए। मुझे पता भी नहीं थी कि इससे कुछ मिलने वाला है। बहुत अच्छा लगा था और मोहिनी के जैसे परफॉर्मेंस भी आपको पसंद आई से वो आगे कोशिश जारी रही कि वो ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस आते रहे। और दीपक सर ने आपने प्रॉमिस है कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँ कोई भी परफॉर्मेंस में आप मतलब सो आप मन के मैं इसने बनाए रखूँ मोर ऊपर। धन्यवाद तुम्हारा। थैंक यू दीपक भाई। ये हमारे 45 दिन की टीम है जो पर पूरा प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। 45 और कार्यकर्ता है, हमारी टीम है, हमारे भाई है, हमारे बहनी बहन है, साथ में मिलकर प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं अकेला प्रोग्राम को कुछ नहीं कर रहा हूँ, है ना। वो तो सही है 45 लेकिन एक लीडर ही सबसे मेन आदमी होते हैं भैया जो लीड करते हैं एक शिप ला। तो आप वो लीडर हो जो सब बंदा लेके चला। तो ओकर पर आप लोग बहुत सारा धन्यवाद आप लोग के इसमें धन्यवाद। थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू। अब आगे बढ़कर अगली बारी है बेस्ट एक्टर फीमेल और एक नॉमिनी है पूजा शर्मा मोहिनी, ज्योत्सना तावड़कर
जोरदार तालियां बजा दें। ये बात सच है कि बहुत कम लोग अपन सच्चाईला मानते कि हाँ मैं ये कर रहे हैं, जैसे साफ दिल से इशिका ही से कि मैं नर्वस हूँ, तो इसमें साफ दिल और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके वो ये साबित कर देंगी शी इज बेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्ड कैटेगरी की ओर, जिन्हें बेस्ट डायरेक्टर और उनकी नॉमिनी है अनुराग निर्मलकर, फूल गजरा 2.0, मनोज शाह, कोंजरी, पुष्कर साहू, मोहनी, संतोष गुप्ता, प्रेरणा बोले, याबेश नाग, सुरमोर संगी, हिमांशु यादव, वाराणसी। आओ बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड गोes to पुष्कर साहू जी और जेकर प्रोडक्शन हाउस है जी म्यूजिक सीजी। अब बढ़ते हैं अगले अवार्ड कैटेगरी की ओर, जिन्हें बेस्ट स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले और इनके नॉमिनी है सुमित बसईवाला, मोहनी, याना मीडिया, सुरमोर संगीत, सुमित बसईवाला, सचकीतुर मुस्कान, आशुतोष सिंह राजपूत, फागुन 2, तुषार सोलंकी, माया देवी, माया लेले। और कौन है विनर शो बेस्ट स्टोरी स्क्रीन प्ले विनर है मिस्टर सुमित बसईवाला जी म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस है। बहुत बहुत बधाई हो, ये मोहनी वाले मन है ना, काम मोहनी डाले जा रोज मेरे सुमित को बड़ा कुछ बोलना तो होता नहीं, मैं तो थक गया। ये क्रिएटिव डायरेक्टर है और ये क्रिएट करता है मंच पर जनरल से अनुभव के दौर पर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट अवार्ड अगली अवार्ड कैटेगरी की ओर बढ़ रहे हैं। अगली अवार्ड कैटेगरी है बेस्ट एल्बम और इनकी नॉमिनीज हैं मोहनी, जी म्यूजिक छत्तीसगढ़, सचकीतुर मुस्कान, ड्रीम्स पॉइंट, फूल गजरा 2.0, शरद बॉक्स, वाराणसी, हिमांशु वीडियो वॉल, तय कहानी बंजा रानी, राज रतन फिल्म्स, सुरमोर संगीत, याना मीडिया। अब सब जन
और 1, माइक नंबर 1 और माइक नंबर 11 में एक को रिवॉर्ड दे दीजिए प्लीज। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के कला के क्षेत्र में जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है राष्ट्रपति जी के द्वारा, ऐसे हमारे सम्मानित पद्मश्री मैडम भी यहाँ पहुंच चुके हैं। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, हम उनको मंच पर बुलाएंगे। और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच पद्म विभूषण तीजन भाई आए रही, पद्म पुरस्कार प्राप्त हमारे कला के क्षेत्र में जगह कर साथी उमर भी यहाँ पहुंचे हैं। हम सबों जी के स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हेलो 22 मिनट है, 22 मिनट है।
अवार्ड को देने के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे बड़े भैया मोहन अग्रवाल जी को, आरएसएस के प्रमुख कनी राम जी को, और मुंबई से स्पेशल रूप से यहाँ पर पहुंचे हैं जिन्होंने सुनील शेट्टी को लॉन्च किया था, दीपक आनंद जी, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ और जोरदार ताली बजाकर इन अतिथियों का स्वागत करें, क्योंकि इनके हम एक ऐसे शख्सियतों का यहाँ पर सम्मान होने जा रहा है जिसको हमारे गंजाधर छत्तीसगढ़ सिंह अवार्ड, स्टार्टअप सिंह अवार्ड हो रहा है, उसके लिए इनको चुना गया है। तो मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ योगेश भैया से, अलीम से बंटी भाई से अनुरोध करता हूँ कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए जो सितारे हैं जिनको हम लाइफ टाइम अवार्ड दे रहे हैं उनको सादर मंच पर लेकर आए। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ संतोष जैन जी को, जो काफी समय से इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और मेरा फिल्म के डायरेक्टर हैं, बहुत सारे उन्होंने फिल्में बनाई है, जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। थिएटर के बहुत बड़े कलाकार भी हैं और उनका स्वास्थ्य बीच में बिगड़ गया था, मगर ये बोलते हैं मैं बिल्कुल फिट हूँ और बिल्कुल फिट दिख रहा है। इसी क्रम में आमंत्रित करता हूँ मोहन सुंदरानी जी को, सुंदरानी वर्ल्ड रेडियो वर्ल्ड के नाम से जोरदार लाइफ टाइम अवार्ड संतोष जैन जी को दे रहा है। वही मंच पर अब मैं इसकी अगली कड़ी का आमंत्रित करता हूँ मोहन सुंदरानी जी को, वीडियो वर्ल्ड के लिए संचालक हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्में बहुत सारी बनाए हैं और इनका पूरा परिवार छत्तीसगढ़ी फिल्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। शायद किसी काम से, पारिवारिक काम से वो शायद निकले हैं, अगर मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो आ सकते हैं, नहीं तो हम इनको फिर से आमंत्रित करेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ विनायक अग्रवाल जी को, ये भी काफी समर्पित कलाकार हैं, अभिनय से हमारे बीच आए हैं, पूरा समर्पित है, छत्तीसगढ़ के फिल्मों के प्रति समर्पित है, छत्तीसगढ़ के कला के प्रति समर्पित है। मैं अली भाई और बंटी भाई से अनुरोध करता हूँ कि विनायक अग्रवाल जी को यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करें और ये लाइफ टाइम अवार्ड है, इनकी जिंदगी भर में कमाई है और इनकी कला उसको देखते हुए हमारे टीम ने इनको यहाँ पर लाइफ टाइम अवार्ड के लिए हमारे बड़े भैया राजू भैया यहाँ पर पहुंच चुके हैं, शायद मोहन भैया चले गए हैं। मैं योगी भैया से अनुरोध करता हूँ कि मोहन सुंदरानी जी का जो अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिन्होंने अपनी जिंदगी छत्तीसगढ़ की फिल्म
तो मुझे स्लोगन याद आता है कि ऊंची पसंद, ऊंचे लोग, ऊंची पसंद। ऊंचे लोग से मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े पैसे वाले, लेकिन मैं 20 साल से जो प्रोविजन देख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि जब रायपुर में मैं 2000 में सीसी नफीदी शुरू किया केवल में न्यूज, तो बोरिंग अवार्ड नाइट मैंने की थी उस समय, मैं बता चुका हूँ। उस 20 साल उस समय बरसते पानी में बोरिंग अवार्ड नाइट को तो ब्रिजमोहन अग्रवाल वहाँ पे आए थे अवार्ड देने के लिए, योगेश से आप लोग भी बहुत सारे लोग उसमें थे, दोनों मेरे से लोग आए थे। तो वो निरंतरता बनी हुई है आज, और वो याद उसी के फिर भी एक अवार्ड ले रहा हूँ उनके हाथ से। पहले इसलिए दिलवाया था मैंने लोगों को, लेकिन आज मैं ले रहा हूँ, बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूँ। वैसे जैसे माँ को अगर पुत्र हो जाए तो बहुत स्नेह का बढ़ जाता है, और फूल कितने भी अच्छा हो, लेकिन अगर खुशबू में आ जाए तो वो फूल की कीमत बढ़ जाती है। हम लोगों को जब व्यवहार ऐसा कोई मिलता है काम के लिए तो निश्चित रूप से बहुत खुशी होती है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, तो ये खुद अपने आप में मतलब ऐसी हस्तियाँ हैं कि जिनके हाथ से कुछ मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और ब्रिजमोहन भैया से बहुत पुराना परिचय करके मेरे को जो पहला आश्रय मिला यहाँ पर समाचार के माध्यम से, कला के माध्यम से, मैं कभी भूल नहीं पाता। और आज शायद उसी का फल है कि आज मुझे जो पुरस्कार मिल रहा है, इसके लिए मैं कहना चाहिए प्यार को प्यारी रहने तो कोई नाम ना दे। तो आप ऐसे ऐसे बना रहे, और ऐसे ही आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, बस यही भावना है मेरी। धन्यवाद। जय हिंद। संतोष भैया का भी आशीर्वाद हमको इसी तरह से मिलता है। आप इसी तरह छत्तीसगढ़ की फिल्मों और कला को समर्पित रहें, और जोरदार ताली बजाएं। अब हमारे साथ विनायक अग्रवाल जी भी यहाँ मौजूद हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार, जमीन से जुड़े हुए कलाकार हैं, और हमने इनको शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया था, और फिर से एक बार इनको यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस आयोजन के लिए भाई योगेश अग्रवाल जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ऐसा जबरदस्त आयोजन उन्होंने किया है, और ये जबरदस्त सफल हुआ है कि यहाँ की उपस्थित कलाकारों को देख कर ये मालूम पड़ रहा है। राज सवाल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मुझे सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे साथ मेरे निर्देशक भाई संतोष सेन जी और मेरे नाट्य गुरु आनंद स्वर्गीय रामकृष्ण चौहान जी, नाट्य गुरु थे, जिन्होंने मुझे कला के क्षेत्र में लाया। और उसके बाद परम आदरणीय राम हृदय तिवारी जी, उनके मार्गदर्शन में क्षितिज शिविर जो संस्था के साथ मैंने अपनी कला यात्रा जारी रखी। इस कला यात्रा के दौरान मुझे कई संस्थाओं ने सम्मानित किया, और विशेष रूप से भाई योगेश अग्रवाल ने 20 साल पहले रायपुर के जो अग्रवाल समाज है उनके द्वारा भी मुझे जो स्थानीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर मुझे कला के क्षेत्र में योगदान के सम्मानित किया है। इस परिवार से मैं केवल मेरा परिवार को भी नाता रहा है। मेरे जो बड़े भैया सत्यवान जी, वो शुरू से मुझे मोहन अग्रवाल जी, आज मुझे खुशी हुई है कि उनके हाथ से मुझे सम्मान मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जी.डी. भारती जी जो अपने अंदाज की वजह से, अपनी कला की वजह से पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हैं, और जब इन्होंने मंच पर कला बनाया तो मंच को छूट कर प्रणाम करके किया, ये एक कलाकार की पहचान होती है। जोरदार ताली बजाएं भारती बंधु जी। साहेब बंदी साहेब, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं इस मंच से जो कह रहा हूँ वो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज ये जो कला संस्कृति का जो वृक्ष इतना बड़ा हो गया है, ये शायद आप लोगों को पता नहीं है कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों को खोजना पड़ता था, उंगली में गिनना पड़ता था। अगर इतनी बड़ी संख्या में कलाकारों की तादाद यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं ब्रिजमोहन भैया का बहुत बड़ा योगदान है। जब ये संस्कृति मंत्री थे तो मेरे को अच्छी तरह से जानकारी है, गाँव से लोगों का चयन किया, ब्लॉक लेवल पे, ग्राम लेवल पे, फिर जिला लेवल पे, फिर संभाग लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे इनको लाने का काम मोहन भैया ने किया है, और उसका साक्षी मैं हूँ। और कहीं ना कहीं जो कलाकार आज इस ऊंचाई तक आए हैं, वो संस्कृति विभाग के मंत्री जब थे आप, तो उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान
दूर तक कहीं मेरी पहचान नहीं होती थी, लेकिन आज इन्होंने बुला करके मेरा सम्मान किया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सदगुरु की कृपा आप पर बनी रहे, आप यशस्वी हो, कल्याण हो आपका। साहेब नमस्कार, वंदे मातरम, धन्यवाद। नमस्कार भारती जी, हमारे बीच एक विशेष शख्सियत यहाँ पर मौजूद है और निश्चित रूप से दीपक आनंद जी हमारे छत्तीसगढ़ की कला से आप परिचित हो रहे होंगे, तो किसी न किसी का भाग्य खुलेगा लगता है मुझको, क्योंकि मुंबई में आपने सुनील सुरथी को लॉन्च किया था। तो यहाँ पे कलाकारों की कमी नहीं है, बहुत बेहतरीन कलाकार है, शूटिंग की व्यवस्था भी है। इनका मैं चाहता हूँ कि योगी भाई परिचय दे दें कि दीपक आनंद जी को कैसे आपने बुलाया। नमस्कार, मैं अपना परिचय दूँ। मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया नए लड़कियों को लॉन्च किया। मैंने आदित्य पंचोली को लॉन्च किया, उसके साथ रुखसार को लॉन्च किया, मेरी फिल्म भी याद रखेगी दुनिया। इसके बाद मैंने दिव्या भारती को लॉन्च किया, सुनील शेट्टी को लॉन्च किया। फिर मैंने एक फिल्म बनाई तुमसे अच्छा कौन है, जिसमें मैंने मोहन कपूर, आरती शाह, किम शर्मा को लॉन्च किया। उन्हें एक लॉन्चिंग पैड माना जाता है गाँव में। और मुझे लगता है कि as a director, I should feel like a star on the set. My actor should not dominate. But when you work with a star, they start dominating a director. तो आप क्रिएटर को डोमिनेट नहीं कर सकते। So I call myself a creator. We create, we don't interfere. और जब मैं छत्तीसगढ़ 4 साल पहले आया था, मुझे काफी लोग मिले, स्पेशली सुनील तिवारी, इसको मेंशन करूँगा। मैं हमेशा कहता था यार क्यों नहीं तुम लोग, तुम्हारे पास पानी है, बिजली है, सब कुछ है, फिल्म सिटी क्यों नहीं है? क्योंकि बॉम्बे में आज जिस चीज़ की कमी है वो छत्तीसगढ़ पूरी कर सकता है। हमारे पास स्टूडियो नहीं है, फिल्में बनाने का हमारे पास स्टूडियो नहीं है। यहाँ फिल्म सिटी होना बहुत जरूरी है। आज नोएडा में 2000 एकड़ का फिल्म सिटी है, वो यूपी वाले बहुत गर्व फील करते हैं। मुझे लगता है ये गर्व जी को भी फील करना चाहिए। एक दिन छत्तीसगढ़ में आप फिल्म सिटी बनेंगे। आप देखिए आपके पास ये क्या फेस्टिवल की बातें कर रहे हैं, फिर आप हॉलीवुड में जाएंगे, आप ऑस्कर्स में जाएंगे, आप हर जगह जाएंगे, बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जब राजपाल यादव एक बड़ा स्टार बन सकता है तो हर चीज मुमकिन है। तो इसको मुमकिन करने के लिए मैं आज भाई साहब से अनुरोध करूँगा कि यहाँ प्लीज एक फिल्म सिटी बनाइए, ताकि हम वहाँ पर इंस्टीट्यूट हो सके एक्टिंग के, डायरेक्शन के, मतलब कितने सारे चीज़ें हम खोल सकें और यहाँ छत्तीसगढ़ को प्रॉपर इंट्रोड्यूस करें वर्ल्ड को, हिंदुस्तान को नहीं वर्ल्ड को। आज वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। आज हर आदमी ये गर्व फील करता है मैं हॉलीवुड में काम करके आया, वो यहाँ काम करना उसका कोई उसको वो नहीं है इम्पोर्टेंट, चाहे वो इरफान खान हो या वो कोई भी हो, मैं हॉलीवुड में फिल्म कर रहा है। तो एक दिन छत्तीसगढ़ के स्टार, छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ का डायरेक्टर गर्व करे कि मैं भी हॉलीवुड में। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दीपक आनंद जी, आपने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया और आप खुशी से आज पधारे और आपने हम सबको बहुत अच्छी बात कही है। और दीपक आनंद जी ने कहा है योगेश भाई मैं बड़े फिल्म अवार्ड को डायरेक्ट करता हूँ, अगले बार तुम्हारा छत्तीसगढ़ी फिल्म अवार्ड को मैं डायरेक्ट करूँगा। So thank you Chhattisgarh for this. थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच कुछ सहयोगी हैं, उनका भी सम्मान दिया, 5 मिनट और लगेगा। हमारे पास कुछ सहयोगी उनका भी हम स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करना चाहते हैं। लॉ को सेल्स फर्नीचर के राहुल गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका मंच का आमंत्रित करते हैं। प्रिंस माइंड एंड डॉट इन हर्षवर्धन अग्रवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनका आमंत्रित करते हैं। ईयर ट्रेन डीपी ट्रेन के डॉक्टर डोमेन गंजीर जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। और SDS म्यूजिक छत्तीसगढ़ के जीवन धन से निर्मलकर हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनको भी यहाँ पर सम्मानित करते हैं। डॉक्टर डोमेन जी हमारे बड़े भैया प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोहन अग्रवाल जी सम्मानित करना है, दूरदर्शन स्वागत करें। और एक बार फिर से मैं मंच सौंपता हूँ और
मैं रिक्वेस्ट करूँ मिसेस रूना शर्मा से, जो कि मिसेस इंडिया है, कि वो स्टेज पर आए। और आमंत्रित करना चाहूँ मैं श्री गजेंद्र श्रीवास्तव जी का, जो निर्माता है मां डारे मया में फिल्म के, लाभांश तिवारी जी, मिस्टर लाभांश तिवारी जी, जो कि श्याम टॉकीज प्रोपराइटर हैं। जोरदार तालियों से मैं चाहता हूँ कि आप सबको जन हमारे गेस्ट बन के जोरदार तालियों से स्वागत करो। मैं आमंत्रित करना चाहूँ रुंझुन जय। हमारे नेक्स्ट कैटेगरी में बेस्ट VFX और नॉमिनीज हैं अगली अवार्ड कैटेगरी हमारी बेस्ट VFX। और आइए जानते हैं हमारे इस अवार्ड कैटेगरी में विनर कौन है हमारे। ओए भाई क्या है तो हर सब में हुई है। बेस्ट VFX प्रवीण दास, मां डारे मया में।
देखन कौन है ये अवार्ड के विनर हमारे बेस्ट ऑडियोग्राफर प्रबोध रंजन साहू चल हट कोनो देख ली रायपुर। हौसला बढ़ाइए कलाकारों का जिनको अवार्ड मिलता है, लगातार तालियां बजाते जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। बेस्ट ऑडियोग्राफर के विनर है प्रबोध रंजन साहू चल हट कोनो देख ली। अवर्धन हमारे अगले अवार्ड की ओर जिन्हें बेस्ट कोरियोग्राफर रुंजुन जो हमारे बीच में है, मैं इनका परिचय कराना चाहता हूँ। रुंजुन जो हमारे छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर हैं, जिनसे हम सभी सीखते हैं, सतीश जैन की बिटिया है। जोरदार तालियां बजाएं हम सभी रुंजुन के लिए। और बिटिया हमारे साथ मंच पर है, अवार्ड में सहयोग करिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड में। हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट कोरियोग्राफर। मैं बताना चाहूंगा इसके लिए बेस्ट कोरियोग्राफर के अवार्ड हम सभी स्वर्गीय निशांत उपाध्याय की स्मृति में दिए गए हैं। जैसा हमने पहले घोषणा करी थी कि निशांत उपाध्याय जी अचानक हमारे बीच से चले गए थे। उन्होंने जो कोरियोग्राफी को एक मुकाम दिया है छत्तीसगढ़ में, वैसा मुकाम आज तक नहीं मिला। और निशांत उपाध्याय जी के असमय चले जाना हम सबके लिए बहुत दुखदायी था। और ऐसा लगा कि छत्तीसगढ़ फिल्म में वैक्यूम आ गया है कोरियोग्राफी को लेकर के। और उसी दिन हमने तय किया था, जब हमने श्रद्धांजलि सभा संस्कृति विभाग में रखी थी, कि हम जो कोरियोग्राफर का अवार्ड होगा वो स्वर्गीय निशांत उपाध्याय जी की स्मृति में रखेंगे। तो लीजिए, मैं चाहता हूँ आप सभी निशांत उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि दीजिए, उनके परिवार को संबल दीजिए कि वो उसको सह सके। धन्यवाद। हाँ, 14 तारीख से शूटिंग लगाना थी। सविता जी ठीक है। बेस्ट कोरियोग्राफर निशांत उपाध्याय जी चल हट कोनो देख लीजिए। निशांत उपाध्याय जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन सभी फिल्मों में निशांत उपाध्याय की जो कोरियोग्राफी थी उसे कोई बीट नहीं कर सकता। तो हमारी जो जूरी थी, जो हमारी कमेटी थी, उसने ये तय किया कि ये अवार्ड उनके जाने के बाद भी हम निशांत उपाध्याय को देंगे। तो उनकी फैमिली से या उनकी फिल्म से सतीश भाई हैं, परिवार के कुछ लोग हैं, कृपया आ जाए और इस अवार्ड को ग्रहण करें। आज इस अवार्ड को देते हुए सतीश जी आप कोरियोग्राफर, बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड निशांत उपाध्याय जी को जाता है।
शर्मा जी हम सबको आशीर्वाद देंगे। आप सभी लोग बहुत प्यार दिए निशानी को और आपका सभी सदा उन्नति करते रहे और खुश रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। और छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री बहुत नाम कमाए, बहुत उन्नति करे, यही मेरा आशीर्वाद सर। फिल्म इंडस्ट्री हमने निशांत उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि स्वरूप 1 मिनट की एक फिल्म बनाई है, आप कृपया किनारे आए और सभी देखें प्लीज। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल की सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद है जाकर अब तक से मैं देर रात तक चली तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली एक और कैटेगरी की ओर। अगली हमारे अवार्ड कैटेगरी है बेस्ट लिरिक्स और एक नॉमिनी है बेस्ट लिरिक्स अवार्ड और एक नॉमिनी है प्लीज प्लीज जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे बेस्ट लिरिक्स उत्तम तिवारी लव स्टोरी।
सहयोगी हैं मिस्टर कृष्णानी जी, मैं आपला स्टेज में आमंत्रित करना चाहता हूँ। हमारे बीच में हम सबके प्रिय मनोज वर्मा जी हैं, जिन्हें कोई भी जी हम सबके प्यारे मनोज वर्मा भैया, मैं आपला आमंत्रित करना नितिन दुबे जी हैं, छत्तीसगढ़ के जाने माने सिंगर हैं, आपला आमंत्रित करते हैं। हमारी पूरी टीम आप सबके आभार व्यक्त करते हैं। और इसी के साथ मिस्टर आलोक मिश्रा जी हैं, जिन एक्टर है, बहुत अच्छे एक्टर है छत्तीसगढ़ के, मैं उन्हें भी आमंत्रित करती हूँ। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मित्र संसदीय सचिव शहर के विधायक विकास उपाध्याय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं बंटी भाई से अनुरोध करता हूँ, अधिकारी से अनुरोध करता हूँ कि वो उनको मंच पर लेकर आए अगले अवार्ड के लिए। विकास उपाध्याय जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ये हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं और शहर के राज्य विधायक हैं। हटो ना भाई सामने वो भैया चल रहा है। मैं योगी से अनुरोध करता हूँ कि भूलन फिल्मों ने पूरे देश ही पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बनाया है, बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, छत्तीसगढ़ में एक नई पहचान भी मिली है। तो मैं चाहता हूँ कि योगी भैया भूलन के बारे में कुछ कहें, फिर मनोज भैया से भी सुनेंगे। मैं भूलन के बारे में क्या कहूँ, मनोज भाई ने तो ऐसा इतिहास रच दिया, मैं भूलों तो भविष्य जोरदार काम किया। मुझे खुशी ये है कि भूलन में मैं भी एक पात्र था, मनोज भाई ने जज का रोल मुझे दिया था, अचानक से दिया था, वो कहानी मनोज भाई बताएंगे बाद में। तो चलिए, बहुत खुशी हो रही इस मंच पर। क्या है ये सम्मान तो बहुत छोटा है मनोज भाई का, लेकिन हमें अपनी इंडस्ट्री को, अपने लोगों का सम्मान करना है, तभी हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ती है। तो मैं विकास उपाध्याय से आग्रह करूंगा कि मनोज भाई को ये प्रतीक चिन्ह देकर के भूलन के लिए सम्मानित करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। नितिन दुबे, आज नितिन दुबे का नाम पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में है। हमें बहुत गौरव है कि नितिन दुबे हमारे छत्तीसगढ़ के हैं और इतना अच्छा गाना गाते हैं। इनके गाने आज कितने मिलियन हो गए, 300 मिलियन। जोरदार तालियां बजाएं छत्तीसगढ़ के स्टार नितिन दुबे का गाना 300 मिलियन क्रॉस कर चुका है। तो हम उन्हें इस मंच से विकास उपाध्याय जी के कर कमरों से छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड देना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ का रत्न है, छत्तीसगढ़ का हीरा है। जोरदार तालियां बजाएं हम सभी नितिन दुबे के लिए।
और उनका एक्टर लोकेश भाई और शोभिता जी ने, तो वो गीत उस समय तो उतना नहीं चली, लेकिन 15 साल बाद आज 30 मिलियन से ज्यादा व्यूअरशिप हो चुकी से एक बार वो मैंने चंदा ने बोलकर जोड़ना ताली चाहता तो कर 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। रानी तोला प्यार दीवाना धन्यवाद योगेश भाई। जोहार आप सबका। आवाज में आ भाई। पहले तो आप सबके धन्यवाद की आप मन के शुभकामनाओं प्यार ले आज ये अवार्ड आए हैं, जेकर पर मोर पूरा टीम जिन है वो उखर जिम्मेदारी जिन पूरे टीम के है कि वो अवार्ड आए हैं। ये एक आदमी के बस के बात नहीं होते अवार्ड। और दूसरी बात ये कि आप कद को अवार्ड बाहर ले लो, जब घर में आपके मान सम्मान नहीं हुए तो वो अवार्ड की कोई कीमत नहीं रहा है। तो ये घर में जिन हमारे अवार्ड के सम्मान हमारे भाई करत है या इधर पहली जिन यहाँ सम्मान हुए है कि नेशनल अवार्ड आए है उधर भर सम्मान हुए थे, ये मोर पर बहुत बड़े बात है कि हमारे घर में हमारा सम्मान हुआ है और सम्मान कर रही है हमारे भाई है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भाई का एक कार्यक्रम करे पर जब का यहाँ अवार्डी है सबका बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। धन्यवाद मनोज भाई। और मुझे वहां से इशारा मिल गया कि ट्रैक रेडी है, आप ये अवार्ड मुझे दे दीजिए। और मैं चाहता हूँ नितिन भाई जब परफॉर्म करते हैं तो सारी पब्लिक हिल जाती है। मैंने इनके शोज देखे हैं, 25-25 हजार से ज्यादा लोग नितिन भाई को सुनने के लिए आते हैं। ये साईं भजन भी बहुत प्रसिद्ध है और आज से 20 वर्ष पहले नितिन भाई आप बताइए, ठीक है? योगेश भैया से जो मेरा संबंध है वो बताना चाहता हूँ। एक हमारा साईं भजन आया था, मुंबई से रिलीज हुआ था और उसका मुझे वीडियो शूट करना था और मैं बिल्कुल ये सोच रखा था कि मैं योगेश भैया को शूट करूंगा और भैया को तो बड़ा टाइट शेड्यूल चल रहा था, भैया के चैनल में चलते थे। तो मैं बोला भैया एक मुंबई का भजन है, कवाली है, साईं नाम लिया, साईं नाम लिया। तो राग कलावती में बड़ा वो खतरनाक कवाली था, तो वो मैं सोचा कि भैया को मैंने ट्रैक भेजा ही नहीं था। तो भैया को मैंने बोला भैया आप शाम को आ सकते हैं क्या? एक यहाँ पास में साईं मंदिर है, मुझे वो मंदिर का भी लोकेशन याद नहीं है। तो भैया बोले यार नितिन ने सब रेडी करके मैं रात को 10 बजे आऊँगा। तो मैं पूरा सब रेडी करके रखा था, पूरा टीम हमारे बारीकी थे, सिमर बारीकी वो डायरेक्टर थे, सब लोग बैठे हुए थे। 10:30 हो गए, अब सब लोग बोले नहीं आएंगे, तुम तो झूठ बोले। लेकिन 10:30 बजे भैया की रेड कलर की कार थी और भैया आए और आते ही फटाक से, अब मुझे पता नहीं था, बोले यार नितिन मैं तो ड्रेस लाया नहीं। तो इत्तेफाक से मेरे पास 2 शेरवानियां थी, एक मैंने पहनी एक भैया ने पहनी और वो भजन हमने शूट किया। और वो भजन जब शूट किया आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्मर हूँ,
अभी अभी आप अतिथि मंच पर रहे, अभी एक और हमारे अवार्ड बचेंगे। शुक्रिया, थैंक यू नितिन भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपका अवार्ड लीजिए। इसका मुझे कोई प्रिपरेशन नहीं था, कुछ बिगड़ गया तो समझ आता हूँ। अचानक भैया ने बोला, मैंने सुना दिया, भैया के जोरदार लग रहा है। अच्छा, तो विमल भाई मंच पे आए, विमल भाई हमारे बीच मंच पे आए, और रजनीश झा जी भी हमारे बीच मंच पे आए। एक बार रजनीश झा जी भाई प्लीज मंच पे आइए। जोरदार ताली बजाएं। हमारे विमल गुप्ता जी पार्षद हैं और हमारे रजनीश झा जी को तो सब समझते हैं, और अनिल द्विवेदी जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लोग समीक्षक भी हैं, क्रिटिस भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, एक बड़े पत्रकार हैं। अब मैं अवार्ड की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ और ये माइक नुपुर और सुभिता को सौंपता हूँ। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ स्टेज पर, जो कि दैनिक भास्कर से हैं, जिनका नाम है अनुराग सिंह जी। आपको स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। और
थैंक यू। राजेश देवांगर जी, जिन्होंने ये हमारा अवार्ड में जितना डिजाइन आप देख रहे हैं, उनके पास बैठे थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ मेहतारी और सारी चीज को डिजाइन किया। 5 घंटे बैठ करके, 3 दिन बैठ करके हमने डिजाइन बनाया था, तो नहीं आ पाए। मेहर खान अगली कड़ी में इनवाइट करना चाहूँ मेहर खान एक्टर, राजेश देवांगर डिजाइनर, जिन्होंने अपना हमारा पूरा शो डिजाइनर इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट अवार्ड की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट म्यूजिक। अपने अवार्ड को आगे बढ़ाएंगे और स्वागत करते हैं अपने बीच हमारे महापौर जी का। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी बेस्ट म्यूजिक जिसके नॉमिनी है
और हमारे गेस्ट को हम स्टेज पर इनवाइट करना चाहेंगे। हर्षवर्धन पारस्कर जी, पूजा गुप्ता जी, राज वर्मा जी, अनुपमा सोनी जी, संगीता निशा जी, नकुल महलवार जी, साथ ही साथ सुनील तिवारी जी। हमारे सबको पहुना मन पर जोरदार तालियां, आप सबको तो संगवारी मन के चाहो तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे सारे गेस्ट का। मैं ना आप मन लागू को कराना चाहता हूँ हमारे बीच एक और हस्ती अभी मौजूद हुए हैं, जेकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, शाम का आओ सुंदर और सुखद बनाएगा। हमारे बीच में उपस्थित थे मिस्टर प्रेम चंद्राकर जी और बहुत प्यारी सी दीदी स्वर को क्या दीदी ममता चंद्राकर जी। बेस्ट म्यूजिक यानी श्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिल रहा है सुनील सोनी और नवरदास मणिपुर। फिल्म मार डाले मयाम। सुनील सोनी जी, नवलदास मानिकपुरी जी संयुक्त ये अवार्ड जा रहा है। अवार्ड हमारा आज मिला थे। मैं योगेश भाई के पूरा टीम में बहुत बहुत धन्यवाद दूँ और मंच में बहुत वरिष्ठ मन खड़े हैं, सबके प्रणाम करूँ। जनता दीर्घा में बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े साहित्यकार, गायक सब बैठे हैं और सबके प्रणाम करूँ। बस एक मिनट बोलूँ मैं, सुनील सोनी भाई और मुलाय अवार्ड काबर मिले हैं मान डारे माया माँ के लिए जिनमें गीत है फूल हसन लागे दानी बगिया झुमारी गे बगिया जब चले आवे सजनी मोरे हाय रे मीनो। ये गीत आज से 40 साल पहले हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कलाकार केदार यादव जी भैया के साथ ये गीत की कंपोजिंग करेंगे इसे और वही परंपरा हम रखे 40 साल की मेहनत सुनील भाई वो गीत का फिर जीवंत करें। फिर हमने फल प्राप्त हुई। आप सब प्रणाम करता हूँ। जय छत्तीसगढ़, जय भारत माता। सबके आशीर्वाद और जूरी मेंबर मतलब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो रंगराजर के जूरी मेंबर है और खासकर योगेश अग्रवाल जी ये अच्छा सुंदर आयोजन आप सबके बीच रखे तो तमाम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कलाकारों का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पद्मश्री ममता चंद्राकर जी का भी सादर प्रणाम, भैया प्रेम भैया को प्रणाम और सब हमारे मेंबर का प्रणाम। अगली अवार्ड की ओर जगह है बेस्ट कॉमेडियन फीमेल।
बेसब्री से वो दिन का इंतजार कर रहा था। हमारे स्कूल कॉलेज के पढ़ाई ला दोनों सलाह करे हम। अब बड़ दिन के पास आ रहा है, अब मुझे भी ये प्रेम कहानी के वो विषय में वो ये हो। हमारे प्रोग्राम में बताइए कौन है हमारे बेस्ट कॉमेडियन फीमेल के विनर। बेस्ट कॉमेडियन फीमेल, हम लोग मेल सुने थे, मैंने पहली बार फीमेल मनीषा वर्मा और फिल्म है मिस्टर मजनू। मनीषा वर्मा फिल्म मिस्टर मजनू, बेस्ट कॉमेडियन फीमेल मनीषा वर्मा। बेस्ट कॉमेडियन मेल हेमलाल कौशल एवं क्रांति दीक्षित। हेमलाल कौशल यहाँ करते हैं और माँ डाले मयामा, क्रांति दीक्षित माँ डाले मयामा। आप दोनों बहुत बहुत बधाई। बेस्ट कॉमेडियन मेल के अवार्ड दो कलाकारों को जाना है, हेमलाल कौशल को फिल्म लव लेटर के लिए और क्रांति दीक्षित को फिल्म मां डाले मया के लिए। बोलना इसलिए चाहता हूँ कि पहली बार मैंने किसी फिल्म में कॉमेडी की है, माँ ड्रे मैम, और पहली बार ही कॉमेडी किया मैंने और उसमें अवार्ड मिल गया मुझे। ये तीसरा
थैंक यू। नेक्स्ट कैटेगरी, एक कैटेगरी और बची। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड कैटेगरी की ओर से है बेस्ट कैमरामैन। बेस्ट कैमरामैन माफी मांगना है वो दोस्त के कुछ करना And the award goes to Best Cameraman. And award goes to Siddharth. Please begin. Siddharth Singh film Maadani Mayama. मैं जो हमारे प्रोड्यूसर है गजन अंकल, उनको धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया इस फिल्म के लिए। और मेरे बहुत सारे बुढ़े और जवान दोस्त बैठे हुए हैं, उन लोग का सबका नाम लेना भी मुमकिन नहीं है, तो भाई अपने अपने मन से अपना अपना नाम सोचो। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ अब दो शब्द आप लोग से भी सुनना है मुझे। आशीर्वाद मैं चाहता हूँ विकास उपाध्याय जी अच्छा पहले महापौर जी से मैं चाहता हूँ कि आप संबोधित करें। आप वरिष्ठ नागरिक हैं रायपुर छत्तीसगढ़ के हमारे, आप छत्तीसगढ़िया आज के इस बहुत सुंदर कार्यक्रम में हमारे बीच में बहुत सम्मानित हमारे शहर के लाडले विधायक बड़े भैया विकास उपाध्याय जी, बहुत सम्मानित हमारे खादी के उद्योग के अध्यक्ष बड़े भैया राजेंद्र तिवारी जी, और आज इतने खूबसूरत कार्यक्रम में जो आप लोगों को इस बहुत खुशनुमा माहौल में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय योगेश अग्रवाल जी, राजेश मिश्रा जी, हमारे अनिल द्विवेदी जी, हमारे भाई विमल गुप्ता जी और उपस्थित सभी यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ के बॉलीवुड के सभी नामी कलाकार यहाँ पर उपस्थित है। सबको सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और यह बहुत अच्छा आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ की प्रतिभा, और जब हम लोग छत्तीसगढ़ी पिक्चर देखने जाते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि अब हम लोग को छत्तीसगढ़ी पिक्चर देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग बॉलीवुड और हॉलीवुड इस तरीके का भी एक्शन सीन पिक्चर हीरो गाने इस तरीके से पिक्चराइज किए जा रहे हैं। तो मैं सभी
बहुत धन्यवाद जुबेर भाई। रंग झांझर 13वां वर्ष है और मैं समझता हूँ कि इस प्रमाइसिस में आकर मेट्रो सिटी मुंबई हॉलीवुड और बॉलीवुड का एक जो वातावरण एक एटमॉस्फेयर आपने यहाँ पर निर्मित किया, मैं सबसे पहले आपको आप पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंच पर उपस्थित बहुत सम्मानित राजेंद्र भैया, बहुत सम्मानित रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज भाई, विमल भाई, अनिल भैया और बड़े सम्मानित अतिथिगण यहाँ पर उपस्थित, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। मैं समझता हूँ आर्टिस्ट की अपनी अलग पहचान है और आर्ट अपने आप में एक हुनर है और भगवान ने जिसको दिया है उसी को दिया है कि अपने आप नहीं आता। तो ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं, ममता दीदी हैं, दिलीप भैया हैं, जैन साहब हैं, वर्मा जी हैं, तमाम लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब लोगों को हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, गर्व होता है। 25 साल 20 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य बने, अब मेट्रो की तर्ज पर रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ प्रदेश को ले जा रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान छत्तीसगढ़ को जानता है और हॉलीवुड छत्तीसगढ़ी फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर से लेकर कैमरामैन, म्यूजिशियन, कोरियोग्राफर, हर व्यक्ति अपने आप में सीमित साधन में। मैं अभी एक बहन से पूछ रहा था कि बॉलीवुड की मूवी बनने में कितना साल लगता है, तो 2-3 साल 4 साल में एक मूवी तैयार होती है। लेकिन हमारे यहाँ इतना कैलिबर है, हमारे यहाँ इतनी क्षमता है कि उसको बराबर टक्कर देने में 3 महीने में 2 महीने में मूवी तैयार करनी है। और बहुत बड़ा साधन नहीं है, सीमित साधन में यहाँ के लोगों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, तो छत्तीसगढ़ की जनता लगातार आप लोगों की मूवी के माध्यम से, आपके सिनेमा के माध्यम से आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। योगेश भाई ऐसे लोग भी यहाँ पर हैं जो प्रोत्साहित करने के लिए, क्या मंच में खड़े होकर बात करना आसान काम नहीं है और परफॉर्म करना एक बार नहीं टेक, 2 बार नहीं टेक, कभी कभी किसी कार्यक्रम को हम लोगों को करना पड़ा तो ऐसा लगता है आप कहाँ फंस गए। लेकिन मानना पड़ेगा कलाकार जो हमारे एक्ट्रेस हैं उनके पेशेंस को मानना पड़ेगा कि बार बार टेक रीटेक के बाद एक मूवी तैयार होती है जिसको हम लोग मंच पर देखते हैं और उसमें बहुत मेहनत लगती है और उसी को आज यहाँ पर आपके माध्यम से अवार्ड देने का काम किया जा रहा है, रिवॉर्ड देने का काम किया जा रहा है। मैं आपकी पूरी टीम को, राजेश भैया को, बंटी भैया को, पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विधायक जी। मैं चाहता हूँ हमारे बड़े भैया राजेंद्र तिवारी जी हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय राजेंद्र रायपुर पश्चिम के विधायक, संसदीय सचिव और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय जी, रायपुर के युवा महापौर विजय ढेबर जी, अनिल भाई, कलाकार बगल में खड़ा है, इसको कई बार मैं बोलता हूँ इसके पास कला भी है, कार है तो ये पक्का कलाकार। और राजेश मिश्रा मेरे छोटे भाई, आप लोगों के बीच आकर के तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं परिजनों के बीच में परिवार के रूप में आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं केवल राजनीति में हूँ, शायद कुछ लोगों को मालूम हो विकास, मैंने 1990 में छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाई थी जिसका नाम था जय मां बगलेश्वरी। मोहन सुंदरानी का उदय हो रहा था, मिल करके एक फिल्म बनाई थी जय मां बगलेश्वरी और उसने लिया था भैयालाल हेड़ो अपने रहे, घनश्याम सेंद्रे और एक लड़की थी जिसने सदगति में काम किया था, ऋचा मिश्रा। हाँ, सत्यजीत रे की फिल्म में काम किया था तो उसका काम मुझे बड़ा अच्छा लगा था। पता लगाया तो वो बड़ी हो गई थी बच्ची, तो उसको फिल्म की हीरोइन बनाया। अब उन दिनों जमाना ऐसा था कि ये जो तकनीकी हम लोग देख रहे हैं उस समय था नहीं, तो बड़े वाले टीवी में जगह जगह दिखाया जाता था, कैसेट का जमाना था और फिल्म काफी चली। उसके गीत एक मुसलमान ने लिखे थे, उसका डायरेक्शन किया था एक मुसलमान ने जिसका नाम जलील रिजवी था, तो फिल्म खासी चली। आज भी यूट्यूब में देखिएगा कभी, और उसमें 3-4 विधायकों को मैंने कुछ रोल भी दिया। तो खैर मैं बताने का आशय यह है कि मैं आपकी विधा का, आपकी गोत्र का ही व्यक्ति हूँ, बाहर का
बीतीदाही मिसाल थे। अभी जो हम लोग देख रहे थे यहाँ जिस तरह के कलाकारों का स्वागत हुआ है, योगेश को निश्चित रूप से इस बात की बधाई दी जानी चाहिए कि इसने एक बड़ा अच्छा काम किया, और ये भी अच्छा काम किया कि हम लोगों के आने के पहले खाली भाइयों को विदा भी करते हैं, तो पूरी दूसरी गोत्र के लोग यहाँ आकर के बैठे ऐसा जीवन की आवाधापी में, उहापोह में, मानसिक तनाव के क्षणों के बीच ये जो क्षण है, हम जो संगीत का आनंद ले रहे हैं, कलाकारों का आनंद ले रहे हैं, ये परमात्मा से साक्षात्कार का समय है। नीरज ने कहा है ना, बन बन उपवन पूर्वा गाए, चमन चमन पुरवैया रे, सुख में गाओ दुख में गाओ, जीवन है दाता भैया रे। तो जीवन के बहुत जो खुशी के क्षण होते हैं, उन क्षणों को हम जीने का काम कर रहे हैं, नहीं तो सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब बाढ़ चलेगा बन जाना, वो वाली स्थिति रहती है। आप सभी को और छत्तीसगढ़ी भाषा को, छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति को बढ़ाने का काम जिस तरह से भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार ने किया है, वो अद्वितीय है। हमारी जो पुरानी संस्कृति छत्तीसगढ़ में, हम लोगों का लालन पालन जन्म यही हुआ, हम लोग भूलते चले जा रहे थे। उस संस्कृति को पुनर्जीवित करके उसको लोकप्रिय बनाने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है, और उसमें बहुत ज्यादा योगदान आपके जैसे लोग दे रहे हैं। हमारी जो परंपरा, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मैंने सोचा था एक बार विकास कि मुंबई में एक फिल्म बनानी है, फिर वहाँ का जो नजरा रहता है कलाकारों का, जब दो चार लोगों से मिला तो मैंने कहा भैया हाथे ही जोड़े बिल्कुल, यहाँ तो हमारे कलाकार सीधे सरल सच्चे और ईमानदार कलाकार हैं, ऐसे कलाकार मिलने का मौका नहीं मिलता। तो खैर आप सभी को जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया उन सबको असीम शुभकामनाएं, और जो प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं वो भी शुभकामना। कम से कम आपने उन्हीं कार्य में अपना योगदान दिया। राजेश लगातार पीछे पड़े रहते हैं इस कार्यक्रम के लिए और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए। एक बात मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूँ, विकास भी उसी विधा के हैं और एजाज भी उसी विधा के हैं। जब कभी हम लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, हम लोग पूरी तरह से आप लोगों के साथ हैं। जब किसी भी प्रकार की, मैं तो खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का चेयरमैन हूँ, मैं बल्कि अब आप लोगों की मदद करूँगा। जब मैं फैशन परेड कराता हूँ, हाँ, तो मैं आपसे कलाकारों की सूची किया करूँगा। मैं ध्यान से उतर गई, मुझको तो गाड़ियों ने ला करके दिया, उनसे करवाया, मगर आइंदा से भविष्य में जो गलती हो चुकी है अब नहीं होगी। अब आप लोगों की प्रतिभा को हम और ज्यादा प्रचारित प्रसारित करने का काम करेंगे। इस बात का आश्वासन, इस बात का वायदा आप सब लोगों को प्रेम से बुलाया और बर्दाश्त नहीं किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जैसा अवार्ड नाइट आज हमने रायपुर में किया है, हम लोग की इच्छा है कि हम ऐसी अवार्ड नाइट मुंबई में करें, छत्तीसगढ़ी फिल्म अवार्ड नाइट मुंबई में करें, हमारे सारे कलाकारों को मुंबई लेकर के जाएं, मुंबई के बड़े बड़े निर्माता निर्देशकों को बुलाएं और वहां पर अवार्ड नाइट करें। अगर आप सबका आशीर्वाद रहे तो हम कुछ सालों में इस अवार्ड नाइट को मुंबई में करना चाहते हैं। पूरी तरह से योगदान, और सबसे अच्छी बात यह है कि विकास आजकल राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। आप इनका सहयोग भी ले सकते हैं, इनको कई जगह जिम्मेदारी दिया गया है, तो विकास का भी सहयोग मिलेगा, एजाज का सहयोग मिलेगा। ये तो खुद अपने आप में कलाकार है, सुबह से इनकी कलाकारी देखने को मिलते रहती है हम लोगों को, तो ये खुद में कलाकार है, तो इन सबका दोहन कीजिए ना, बिल्कुल दोहन कीजिए। थैंक यू, आप सभी स्माइल करेंगे। छोटी सी मुझसे त्रुटि हुई है, छोटी सी त्रुटि, प्लीज आइए। एक बहुत खुशी का पल है हमारे साथ, एक बहुत खुशी का पल है कि हमारे बीच में हम सबके प्रेरणा स्रोत छत्तीसगढ़ के स्वर कोकिला हम जिन्हें कहते हैं, पद्मश्री ममता चंद्राकर जी हमारे बीच है। मैं चाहता हूँ कि मंच पे आए, हम उन्हें सम्मानित
हमने काम भी किया था। बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है कि हम इस मंच से आज उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री आपको सम्मानित करना चाहती है। ममता जी, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री आपको सम्मानित करना चाहती है, सारे लोग सम्मानित करना चाहते हैं। हम अतिथियों के हाथ से आपको सम्मानित करना चाहते हैं। लाइए लाइए आशीर्वाद दे दीजिए आप सभी को। सबसे नमस्कार। मुझे मेरे प्रिय भाई शुक्ला जी, देवर जी, उपाध्याय जी और योगेश अग्रवाल जी, क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह भाई, आपको भारत रत्न मिलेगा, भारत रत्न मिलेगा भाई। आप ये पल हर इंसान सोचता है मुझे ये पल कब मिलेगा। मैं भी बचपन से ये ख्वाब देखती थी कि ये पल कब आएगा, लेकिन आप सच मानिए, आप प्रयास करते रहिए, वो पल जरूर आता है और वो परिणाम आपको दे जाएगा जो आपकी मेहनत है। और सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि लंबे समय से आप रंगझाझर का मंचन कर रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, कलाकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनके हौसले को बढ़ा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत श्रेय जाता है आपको। और मैं चाहती हूँ कि हर वर्ष इसी तरह आप करते रहें और आपकी जो इच्छा है कि आप मुंबई में जाकर ये अवार्ड फंक्शन करें, हम कामना करते हैं कि वो दिन भी हम देखेंगे जरूर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्थान ग्रहण करें और अभी आप बैठिए अवार्ड में प्लीज।
अब बारी विजेता घोषित करनी है बेस्ट एडिटर अवार्ड। ज्यादा वो हमारे देश के अपने बताने वाले हम सभी को। बेस्ट एडिटर तुलेंद्र पटेल जी, चंदन कुलदेवी। हम सतीश के अंदर बैठे रहे हैं, आप आओ भाई, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत ही सुंदर पिक्चर और छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा नाम रोशन करें। थैंक यू। बेस्ट एडिटर अवार्ड गोes to तुलेंद्र पटेल, चंदन कुलदेवी।
बेस्ट सिंगर फीमेल चंपा निशा, फिल्म लव लेटर, चंपा निशा जी। लव लेटर से कोई भी आ जाए, उत्तम भैया आइए। हमारी सहयोगी फोटोग्राफर भैया थोड़ा इधर साइड से लो ना। कविता सोनी जी कोरबा से आई है, जो बच्चों के लिए बहुत काम करती है, बच्चों के लिए फैशन शो करती है, बच्चों की बहुत सारी प्रतियोगिताएं करती है। छत्तीसगढ़ के बच्चों का शो मुंबई में कराती है, यहाँ के बच्चों को ले जाकर के अलग अलग विधा में उनके लिए काम करती है। ऐसी कविता सोनी जी को हम इस मंच से सम्मानित करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आप कविता सोनी जी मंच पर आए, जो कोरबा में रहती है, बहुत अच्छा काम करती है, फैशन शो के अलावा सारी चीजें विधा करती है बच्चों के लिए। हम इन्हें आज इस मंच से सम्मानित करना चाहते हैं। कविता सोनी जी एक हमारे साथी हैं जिन्होंने कोरोना काल में एक अस्पताल खोला गरीब मरीजों की मदद करने के लिए, और काफी उन्होंने काम किया, और कलाकारों के लिए भी काफी काम किया। छत्तीसगढ़ी कलाकारों के लिए दिलीप सरवरी जी के साथ उन्होंने बहुत मदद की कलाकारों की। ऐसे साथी भाई प्रशांत ठाकर जी हमारे बीच हैं, मैं प्रशांत ठाकर जी को इस मंच से सम्मानित करना चाहूंगा। भाई प्रशांत ठाकर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, और हमारे बीच में उपस्थित गरीब मरीजों के लिए, गरीब कलाकारों के लिए काफी मेहनत की। एक पोस्टर विमोचन कराना चाहते हैं आप इस मंच पर। एक फिल्म का पोस्टर है, बलिदानी राधा गुरदास अमरावती नृत्य एसोसिएशन डायरेक्टर, और इस पोस्टर को रिलीज करेंगे आशिक छत्तीसगढ़िया। अच्छा, तो ये कौन सा पोस्टर है? आइए हमको लीजिए पहले। बलिदानी राधा गुरु नानक दास जी आए, और हम जयप्रकाश पांडे जी को मंच पर बुलाना चाहते हैं, जिनके पिताजी ने पहले फिल्म बनाई थी घर द्वार। वो छत्तीसगढ़ की फिल्मों की काफी सेवा करते हैं। हम उन्हें इस मंच से सम्मानित करना चाहते हैं, श्री जयप्रकाश पांडे जी। जयप्रकाश पांडे जी अगर वो यहाँ पर उपस्थित हो तो आ जाए, हम उन्हें यहाँ पर सम्मानित करना चाहते हैं। कल राजधारा से विजय जैन मित्तल जी भी हमारे बीच आए, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आइए विजय जैन। मोना जी को दीजिए, रुचि जी को दीजिए, दिलीप भाई हैं, सुकेश भाई हैं। और हम आपको ये बता दें कि हमारी टीम के मुख्य कार्यकर्ता, मुख्य साथी इस फिल्म के लेखक हैं, वो भी हैं, वो भी साथ में यहाँ पे मौजूद हैं। इधर आइए मैम।
इसके निर्माता है तेजपाल लहरी, लेखक निर्देशक नितेश लहरी जी। छत्तीसगढ़ी पारिवारिक फिल्म है, जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें भाई तेजपाल लहरी जी और नितेश लहरी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस फिल्म के वितरक है नवीन लोढ़ा जी, जो हमारे सहयोगी भी है, हमारी टीम के सदस्य भी है। नवीन लोढ़ा जी इस फिल्म के वितरक है। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी के नारे हैं, एक क्लिपिंग देखेंगे। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएशन जो इस अवार्ड को करा रही है, हमने सदस्यता फॉर्म बाहर टेबल पर रखे हैं। जिन किसी को उस फॉर्म को भरना हो वो बाहर से फॉर्म ले सकते हैं और सदस्यता फॉर्म ग्रहण कर सकते हैं। और हमने जो पत्रिका विमोचन किया है वो पत्रिका भी बाहर रखी हुई है। आप जाते समय ये दोनों चीज लेकर के जाए और फॉर्म को भर करके जाए। थैंक यू। इसी के साथ हम अपने अवार्ड को आगे बढ़ाते हैं और हमारी फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है बेस्ट सिंगर मेल, और इसके नॉमिनीज हैं हमारे भी अवार्ड है बेस्ट सिंगर मेल। आप इस कॉम्पिटिशन में भी है और आप सभी दूसरा करना चाह रहे हैं, ये बड़ा सहयोग है। बेस्ट सिंगर मेल भाई अनुराग शर्मा जी, लव लेटर। अनुराग शर्मा जी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, बहुत बड़ा दिन है आपका। लव
एक और इस विषय में है कि बेस्ट सिंगर में 2 लोगों को अवार्ड गया है। हमारे पास एक ही बीच आ पाई, अभी हमारे टीम ने बताया कि 2 लोगों को अवार्ड मिला है। तो वो भैया दूसरा नाम बताएंगे? एक मिनट, बेस्ट सिंगर मेल में 2 लोगों को अवार्ड दिया है। तो आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ी स्टार्टअप सीरीज अवार्ड, और हमारे बहुत सारे साथी पूरे इंडस्ट्रीज के लोग यहाँ पर बैठे हैं, कलाप्रधान बैठे हुए हैं, हमारी टीम के सदस्य छत्तीसगढ़ी फिल्म के तो सुनील तिवारी यहाँ मौजूद हैं, प्रकाश अवस्थी यहाँ मौजूद है, राजेश अवस्थी यहाँ मौजूद हैं, शेख रहीम जो हमारी टीम के सदस्य वो यहाँ मौजूद हैं, सतीश जैन जी जब थैंक यू वेरी मच। आज ऐसा लग रहा है कि मेरे संगीत सफर एक पूरा चक्र पूरा कर लिया, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं आज जो यहाँ खड़ा हूँ और मतलब मेरी जो भी हैसियत जो भी औकात है लेकिन दुबे की, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे परमात्मा की शिद्दत की वजह से। मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजाइए। मैं भैया को मैं बताना चाहता हूँ कि जब मेरे स्ट्रगल के दौर चल रहे थे सन 2001 में, तो मैं उस वक्त ऑडियो कैसेट के ऐसे प्रचार वाले कैसेट बनाता था। आप सुने होंगे ना कि सेल पूनम साड़ी सेल ऐसा करके, ये सब मैं ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड किया था। तो भैया उस वक्त कार लेने वाले थे, भैया को उस वक्त लोग चल रहा था नाचो चालू सुपर हिट चल रहा था। तो भैया कार ड्राइविंग सीखने के छत्तीसगढ़ एक्सपर्ट मोटर ड्राइविंग स्कूल जाते थे, भैया आपको याद। तो वहाँ पे मैंने ना उस स्कूल के लिए एक कैसेट बनाया था, उसमें 2 लाइनें मैंने किशोर कुमार जी की गा दी थी। तो भैया जब ड्राइविंग सीट पे बैठे और उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो बोले भैया ये किसकी आवाज़ है, इसको मुझसे मिलाओ। और फिर वो जो ड्राइवर जो सीट सिखाता था उसने मुझे मेरे घर आकर फोन उन्होंने गया और उन्होंने बताया कि दिलीप षडंगी तोला खोजे थे नितिन, ते कहाँ बोला दिलीप षडंगी ने जस्ट हमारा तोला कावर खोजे थे भाई। तो मैं गया भैया करा और भैया बोला देखिस और बोला सुनिस। और सबसे बड़ी बात वो आज हम लोग कहते हैं कि कटक की रिकॉर्डिंग होती है, कटक को मुंबई कहा जाता है। सन 2001 में
मुझे लगता है जब ऐसे शिष्य नाम करते हैं तब लगता है कि शायद उस समय कुछ अच्छा किया था। और अपने बारे में अभी गाना गा रहा हूँ, 2 लाइन मैंने कहा है, होली के ऊपर गाया मैंने। मुड़ी में बाल नहीं है लगावत है कंघी, मुड़ी में बाल नहीं लगावत हो कंघी, सुरता जाने नहीं गावत दिलीप सरंगी। थैंक यू। हम लोग किनारे खड़े जाए, नेक्स्ट अवार्ड के लिए प्लीज। नेक्स्ट अवार्ड और अब बढ़ते आगे की ओर हमारा नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट फीमेल, जिनका नाम है ऐसे कैसे नहीं छोड़ हैं? ये वर्दी तो राज जनता की सेवा में मिले हैं कि नेताओं की तरह जाके नहीं मिले हैं। देर नौकरी तो फालतू बात करता। आज का गंभीर आरोप लगे तो बेटा को तेरा जाना। हाँ जाना तो मोर बेटा गलती करे है तब दूध के दूर ताहू मर गई ताहू जाना तो ये वर्दी के आड़ में कच्चा काम होता सब जाना था। रिश्वतखोरी कर दो, हत्याखोरी कर दो, चोटा हो। देख मनु ये हम लेखा की सहेली है ना, तो सहेली जी से रहिबे और तो खूब खातिरदारी कर और को मोर बेटा ऊपर जादू टोना करके और फंसा के कोशिश करके बताए अरे मोर बेटा मेरा जान हो तो जम्मू भूसा उतार दूं। और सुन तो दास्तां होगी ना ताज ब्याज ये हल चल दे चेहरा ये तो बसे दिल को कैसे जादू नहीं चलाए। क्या मतलब जो तूने नहीं पूछा तूला पैदा करेगा कहीं भी हम इरादा नहीं और मैं इरादा हमारा चाहता और मन नहीं से भी होता ठीक से ये हत्या के बंदा के मां बोलते थे। आइए प्लीज। सरला जी हमारे साथ है जो अवार्ड ला रही है। मैं बताऊं सरला जी बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, बहुत समय से छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम कर रही है, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, बहुत सीनियर आर्टिस्ट है। और हम लोग का सौभाग्य है क्या सरला जी सभी अवार्ड को अपने कर कमलों से हमारे बीच डालने का। तो जोरदार आप सभी सरला जी के लिए तालियां दीजिए। थैंक यू सरला जी। ये नीचे क्या बेस्ट कैरेक्टर ऑफ आर्टिस्ट फीमेल है तो आपके पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरा डिप्टी कलेक्टर भी है, अब कैरेक्टर आर्टिस्ट का तो आगे मिलना चाहिए सभी को। बेस्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट फीमेल अंजलि सिंह चल हट होने बेस्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट फीमेल अंजलि सिंह, फिल्म चल हट दोनों देख लीजिए। थैंक यू अंजलि। बहुत समय से छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम कर रही है, लगभग मैं सोचता हूँ 20 साल से ज़्यादा हो गया है और बहुत सारे अलग अलग रोल आपने निभाए हैं। और आज इस मंच पर हम सभी आपको सम्मानित कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, कुछ बोलिए। आपका सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं तो मतलब बोलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैं सत्य का धन्यवाद करना चाहता हूँ। काव्या की सर का बड़ी जिम्मेदारी थी इसमें मैं शारदा देवी बन सके और सब जन शारदा देवी पसंद है और जब का डायरेक्टर है सब जन धन्यवाद। प्रोड्यूसर को अलग धन्यवाद देना चाहता हूँ तो तुम कैसा नहीं दिया सब प्रोड्यूसर में अलग अलग धन्यवाद, को एक्टर को एक्ट्रेस में सब जन धन्यवाद। तुम सबके बिना में कुछ नहीं, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो या स्पॉट बॉय वो कोई भी हो, एक फिल्म कंप्लीट तभी होती है जब सब जन के साथ होते हैं। तो आप सबको झल्ला हृदय से धन्यवाद। जय जवान। धन्यवाद। नेक्स्ट अवार्ड प्लीज। हमारे नेक्स्ट अवार्ड जारी है बेस्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट मेल और एक नॉमिनी है
बेस्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट ने रजनीश झांझी चलहट तुम देख लीजिए। थैंक यू। बेस्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट में रजनीश झांझी, फिल्म चलहट करो देख लीजिए। रजनीश भाई का वाकई में कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है। बहुत मेरे पुराने दोस्त है रजनीश भाई। मैं चाहता हूँ रजनीश भाई 2 शब्द आप जल्दी जल्दी बोले, मैं कैरेक्टर बात बनाऊँ। जल्दी जल्दी मैं बोल देता हूँ। मैं सतीश भैया को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मुझे इतने वर्षों तक इतना अच्छा काम दिया और मेरे टैलेंट को समझा और सामने लाया और इस वजह से मुझे अवार्ड मिला। जल्दी बोल दिया। थैंक यू। थैंक यू रजनीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक हम फिल्म का पोस्टर रिलीज करना चाहते हैं, बलिदानी राजा, जिसके निर्माता निर्देशक हैं गुरु मानक दास जी। मैं चाहता हूँ मंच पर आए और उस पोस्टर को विमोचित करें। आइए। फिल्म का नाम है बलिदानी राजा, गुरु मानक दास जी, ये फिल्म का नाम है। और डॉक्टर जे.आर. सोनी जी इसके निर्माता है। मैं चाहता हूँ आप आए
कलीम जी, पारुल अग्रवाल जी, सुनील तिवारी जी, विजय नायर जी, प्रमोद जैन जी, पारुल अग्रवाल जी, कलीम भाई, राजीव भाई, सुनील तिवारी भाई, प्रकाश अवस्थी भाई, अनिल द्विवेदी भाई, ये लाइव क्या हुआ लाइव नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस जिनका नॉमिनी है सृष्टि तिवारी, लव लेटर। आप
हमारे साथ साथ इतनी सारी सुंदरियां इस मंच पर हैं जो ताज पहन करके आए। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाएं उन सभी सुंदरियों के लिए जो इस मंच पर आई हैं। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट डेब्यू एक्टर अवार्ड गोज टू, ये ज्वाइंट विनर है, नाम बता सकते हैं? और कोई? भूपेश चौहान फिल्म नया हो गए एवं रिंकू राजा फिल्म धर्मदा। नाम दो है, अवार्ड एक है हमारे पास, तो एक अवार्ड हम उनके घर भिजवा देंगे। भूपेश चौहान नया हो गए और धर्मदा फिल्म के लिए रिंकू राजा। अच्छा, एक अवार्ड और हमारे पास में, एक हमने रखा है स्टेज पे फोटो खिंचाने के लिए अवार्ड, बाकी एक हम घर भिजवा देंगे जितने लोगों को दे लो। थैंक यू वेरी मच। भूपेश भाई, आपके अवार्ड हम आपके घर भिजवा देंगे। थैंक यू वेरी मच। रिंकू भाई, थैंक यू वेरी मच। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड कैटेगरी की ओर। नेक्स्ट अवार्ड कैटेगरी है हमारा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, जिनके नॉमिनी है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। Can we have the nominees please for best supporting actress? ये अवार्ड कैटेगरी नंबर विनर कौन है? बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस प्रकाश अवस्थी जी से पढ़े तो अच्छा है। एक्ट्रेस बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, अब एक्ट्रेस है कौन? ज्योत्सना कामरगांव जी। हमारे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस है ज्योत्सना ताम्रकार, फिल्म कुरुक्षेत्र। जोरदार तालियां हो जाए। अनिल भाई भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम चाहते हैं कि आपके कार्यक्रमों से हो। और
बेस्ट विलेन फीमेल। जिसके नॉमिनीज हैं अरे क्लिपिंग तो आने दो मेरे भाई। थोड़ी सी फेरबदल हुई है। हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जिसके नॉमिनीज हैं ले जाऊं देख लेते प्रणाम भैया हैप्पी बर्थडे भैया क्या भैया हैप्पी ये तो ले जाओ क्या कर दिया गाड़ी चक्कर में माने आज देता हूँ हमारा सन काले पुष्पेंद्र ठाकुर। कहा है कि वो हमारा बाबू है ओकर गला में मंगलसूत्र भी नहीं और मानो में सिंदूर भी नहीं कम से कम तो बढ़िया तो नहीं पता नहीं सुनता अरे मोर बेटा है आइए प्लीज। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर उसमें से माँ गाने नया माँ। Congratulations। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पुष्पेंद्र सिंह फिल्म मां गाने मैम। मैं चाहता हूं कि बुलंद आवाज के धनी पुष्पित भाई बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, व्यवहार बहुत अच्छा है और आवाज भी बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूं आप कुछ बोलिए। जय जोहार अरे सबला प्रणाम सुनील भैया प्रणाम प्रकाश भैया प्रणाम सतीश भैया प्रणाम प्रेम भैया प्रणाम उत्तम भैया प्रणाम मनीष मानिकपुरी प्रणाम सबने पुष्पेंद्र लेके आए भैया जनरल लेके आए लगती कावर की जब ऐसे योगेश अग्रवाल करो काम बुता करते ना 10 झंडा पाछू रखते मैं भी सीख गया 10 झंडा लेके आए और मैं सबसे पहले भाई आप लोग शांत रहो तो अवार्ड मिल पाएगा फिर व्यवधान होगा। प्लीज आप बैठिए। आप सबको एकदम लास्ट में बोलने के अवसर देंगे। जोरदार नारा लगाएंगे हम सभी, ठीक है? लेकिन अभी डिस्टर्ब ना करें प्लीज। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि मुला छत्तीसगढ़ी फिल्म में इंट्रोड्यूस करने वाला माननीय प्रेम चंद्राकर जी का प्रणाम करता हूँ और छत्तीसगढ़ के फिल्म इंडस्ट्री में स्टार बनाए के जिन जुम्माली से और जिन मुला आशीर्वाद दी से सतीश जैन साहब का ओला मैं प्रणाम करता हूँ। सुंदरानी परिवार का प्रणाम करता हूँ कारण बहुत काम देते उत्तम भैया का प्रणाम करता हूँ, प्रणव झा का प्रणाम करता हूँ, केसर वाणी जी का
मैं प्रणाम कराता हूँ। बहुत अपन जन है जन मन मोला आशीर्वाद देते काम देते और फिर कोशिश करूँ कि ये सब जन मोला अगले गाँव काम दे ताकि मैं आओ अच्छा काम कर सकूँ। सब जन का प्रणाम और योगेश भाई और राजेश मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम सह कलाकार में मोला दी, नहीं तो फिर फालतू के ऐसे चले जाते हुए। और हमारे बहुत असर ऐसे हमारे स्पॉट बॉय, लाइट मैन और असिस्टेंट डायरेक्टर्स बहुत जन है जिन्होंने मोला आशीर्वाद देते मोर संग में साथ में काम होता करते ओकर कारण आज मैं खड़े हूँ। मोर बहुत जन ऐसे गुरु है जिन्होंने मोला छत्तीसगढ़ी सिखाए है। काबर के मैं छत्तीसगढ़ी बोले पर नहीं जानत रहे हूँ, तो बहुत जन सिखाए है जिसमें अनुज शर्मा है, मनमोहन ठाकुर जी है, हमारे प्रेम चंद्राकर जी है, हमारे संगीता निषाद जी है, हमारे प्रकाश अवस्थी जी है। मैं नाम लूँ तो अक्का लंबा लिस्ट है जेमन मोला छत्तीसगढ़िया बनाए हैं। आज मैं अपन गर्व से कहता हूँ कि मैं हूँ छत्तीसगढ़िया। प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद विक्रम भाई। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी हैं। मैं चाहता हूँ आप भी अपने विचार रखें आज के इस कार्यक्रम के बारे में। थैंक यू योगेश जी। देवी और सज्जनों, पूरे चालीवुड को यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। एक पत्रकार के तौर पर क्रिटिक्स लिखना ये हमारी ड्यूटी है और कभी कभी किसी को मन में लग भी जाता है। ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो आज मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ सभी को। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि योगेश भाई का जो रंग झांझर है 13 साल छत्तीसगढ़ में मैंने इतने साल की पत्रकारिता में बहुत सारे फिल्म अवार्ड्स देखे, कुछ बंद हुए कुछ खत्म हो गए, लेकिन रंग झांझर 13 सालों से चल रहा है। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि और पूरे चालीवुड को लेकर के यहाँ पर कहना एक बड़ी उपलब्धि है। योगेश भाई के नेचर का ये जादू है, उसका करिश्मा है। प्लीज एक बार बिग एंड हो जाए इस पूरे आयोजन के लिए, रंग झांझर के लिए। बस एक बात और बताना चाहूँगा, मैं और योगेश जी 2018 में दिल्ली में थे और आप सबको एक जानकारी दे रहा हूँ मैं, पूरे फिल्म निर्माता निर्देशक सभी को, कि इस देश में एक नया फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है, फिल्म अवार्ड सेरेमनी, चित्र भारती। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ से मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब में जाके चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल को जरूर देखें। सुभाष घई से लेकर मधुर भंडारकर, करुणा राणा, सभी लोग उस 2018 के कार्यक्रम में थे और योगेश जी उस चित्र भारती के यहाँ पूरे प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं उनके साथ सहयोगी हूँ। इनकी एक फिल्म थी वो बहुत चर्चित फिल्म थी, शायद जेंडर उस पर थी, शॉर्ट फिल्म थी, वो नॉमिनेट हुई। सुभाष घई, मधुर भंडारकर, राजा मौली, ये सारे लोग दिल्ली का जो फोर्ट स्टेडियम है वहाँ पर थे। उस होप फिल्म को अवार्ड्स मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो शॉर्ट स्क्रीनिंग हुई और वहाँ पर इनको अवार्ड दिया। तो चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल, फिल्म अवार्ड सेरेमनी, ये भी पिछले 5 आयोजन हो चुके हैं। शायद योगेश जी का चलेगा तो अगला आयोजन यही होगा, मधुर भंडारकर और बाकी उसके संयोजक है। तो योगेश भाई की ये छलांग है, वो बहुत ही जमीन से बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन मैंने उनको देखा कि दिल्ली में भी उनके उतने ही मुरीद हैं। हम लोग दिल्ली में थे तो नाट्य अकेडमी, जो क्या बोलते हैं इसको, मैं बोल रहा हूँ NSD, नेशनल स्कूल ड्रामा ऑफर, वहाँ पर उनको बुलाया गया और एक वहाँ पर स्टूडेंट के साथ एक सेमिनार हुआ, एक लेक्चर हुआ। तो योगेश जी अपना दायरा है और ये इसलिए है कि वे कलाकार हैं, वे जीवट इंसान हैं, मिलनसार हैं। मैं देख रहा हूँ कि इस मंच पर इतना बड़ा मंच होने के बाद भी वो सभी को बुला रहे हैं और सभी के साथ उन्हें सम्मान दे रहे हैं और इस खासियत है इस रंग झांझर फिल्म समारोह। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने मुझे इतनी देर झेला, उसके लिए बहुत बहुत आभार। योगेश भाई, आपने हमें बुलाया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं, जो कि है बेस्ट विलेन फीमेल। और हमारे नॉमिनीज हैं कि हम गेस्ट को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहते हैं। हमारे बीच मिस्टर करण खान है, मैं उनको ससम्मान स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। मिस्टर सोहेल खान जी हैं, आपको भी
मुलाकात हो रही बाहर में, जब से पीयूष के मोबाइल में देखते तो बात करत गिरे। हमारे बीच बहुत क्यूट सी एक्ट्रेस अनुकृति चौहान जी हैं, जिनको मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। अनुकृति चौहान, करण खान जी, संजय वैल्कन जी, हमारी नेक्स्ट कैटेगरी में बेस्ट विलन फीमेल, जिसके नॉमिनीज हैं शुरू करते हैं नॉमिनी। बेस्ट विलेन फीमेल, इसलिए हमने अनुकृति चौहान को बुलाया है। बेस्ट विलेन फीमेल को सम्मानित करेंगे हम सभी कलाकारों के साथ। दर्शन भाई हमारे बीच है और स्वागत करते हैं आपकी आयोजन पर। बेस्ट विलन फीमेल के नॉमिनीज हैं उर्वशी देवांगन for the 2000 मिस्टर मजनू, संगठन पुराना मुसलिम मुरार चीजों से जो भी आ गया और यहाँ आखिरी सांस तक नहीं। श्रेया महन for the film नवाब विधान, काम था उनके भाई 11 बजे। और दूसरा का अच्छा तो अपना लग सकता है, सोचना चाहिए। कैसे सोचना चाहिए ना। और बारी है विजेता घोषित करेंगे श्रेष्ठ खलनायिका फीमेल। विनोद शंकर जी हमारे बीच है, भिलाई से आए हैं। अलखराज जी हमारे बीच है, दर्शन भाई झारसुगड़ा से आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा विनोद शंकर जी जो हमारे बीच है, ये डांस के ऑल इंडिया कोच हैं। लैटिन अमेरिकन डांस जो होता है, विनोद शंकर जी भिलाई के पूरे भारत के कोच हैं। जोरदार तालियां बजाएं कि ये हमारे बीच आए हैं। विनोद शंकर जी विशेष रूप से हमारे बीच आए हैं, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। दर्शन भाई झारसुगड़ा से हमारे बीच आए हैं, बहुत अच्छे हमारे सहयोगी हैं, कार्यक्रम में इनका सहयोग रहता है। और ये जजमेंट जितने बड़े बड़े फैशन शो भारत में होते हैं, ये जजमेंट करने के लिए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाकी सभी कलाकारों से आप सबका परिचय हम अवार्ड के लिए आमंत्रित करते हैं। होली अवार्ड ये हमारे बेस्ट विलन मेल, बेस्ट विलेन फीमेल बेस्ट विलेन फीमेल का अवार्ड अधिकृत पड़ेगी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त और बहुत क्लोज है मेरे सृष्टि देवांगन को बेस्ट और विलन के लायक उसको वो कैरेक्टर नहीं है, वो बहुत स्वीट है, बहुत क्यूट लड़की है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो आई एम सो हैप्पी कि उसको अवार्ड मिला है। और फिर है हम दोनों साथ में काम किए मिस्टर मजनू।
वो सारी फिल्में रखते हैं। यूएफओ डिजिटल रीजनल हेड छत्तीसगढ़ हमारे बीच है मिस्टर राकेश मिश्रा जी, हम उन्हें इस मंच से सम्मानित करना चाहते हैं। यूएफओ के छत्तीसगढ़ हेड जो हमारी सारी फिल्मों को थिएटर में बताते हैं, राकेश मिश्रा जी हमारे बीच है। आप सभी के कार्यक्रमों से उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। राकेश मिश्रा जी हैं, आ रहे हैं कहीं से? चलिए, मेरे ख्याल से कहीं होंगे, उन्हें भी बुलाते हैं। नेक्स्ट अवार्ड प्लीज, हम सभी से किनारे आ जाए। नेक्स्ट अवार्ड अगले अवार्ड बेस्ट विलन मेल, बेस्ट विलन मेल जिनके नॉमिनी है थैंक यू वेरी मच। आइए प्लीज अवार्ड प्लीज। एकदम बेस्ट विलन मेल के अवार्ड कौन ला साथी? आइए देखिए, बोलिए। भाई, करण भाई, राजेश भाई, संजय भाई, अरे मैं नाम ले लें। नमस्कार। हमारे छोटे भाई जो काफी दिनों से अभिनय में लगे हुए हैं, सतत लगे हुए हैं और सभी उनको जानते हैं। उनका काम बड़ा अलग चोखा है, काम केवल का करते हैं, शौक सुनील तिवारी इवेंट जो काम करते हैं और दुनिया सुनील तिवारी फिर और आए भैया जोरदार तालियां बजाएं सुनील तिवारी के लिए। सुनील तिवारी की जो वाइफ है सृष्टि, वो भी बच में है। उसने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, लव लेटर और कई सारी फिल्मों में काम किया है। सृष्टि जहां भी वो मंच पे आ जाए, सृष्टि तिवारी किधर है, उसी के कारण ये विलेन बना है। सृष्टि तिवारी जहां भी आ जाए, हाँ ये और उनकी गुड़िया भी आ गई है। मैं आपको बताता हूँ, सृष्टि आपने भी बहुत अच्छा रोल किया है लव लेटर में, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपको बताता हूँ, आज आप जितना ये तामा देख रहे हैं, सुनील तिवारी मेरा बहुत बचपन से मेरा छोटा भाई है और हमारी टीम का सदस्य भी है, लेकिन उसने बहुत अच्छा काम किया है और ये पूरा जितना डेकोरेशन का काम था, पूरा डायरेक्शन सुनील तिवारी ने किया। जोरदार तालियां
दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं चाहता हूँ इसलिए हमसे बात करें। थैंक यू योगेश जी, थैंक यू रविंद्र जी, थैंक यू मनीष जी, जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया कि इस रोल को मैं बहुत अच्छे से प्ले कर सकता हूँ। मनीष जी यहाँ पर भी हो, प्लीज़ मैं चाहूँगा स्टेज पर आएँ। हमारे डायरेक्टर मनीष मानिकपुर जी। कोशिश ये रहेगी कि हर साल इस तरह से हम पिक्चर में आप सबको एंटरटेन करते रहें। मनीष भैया मेरे डायरेक्टर, मेरे भाई फिल्म बनाते रहे ऐसे ही, और योगेश भी ऐसे बड़े शो ऑर्गेनाइज करते रहे जहाँ पर हम सब एक छत के नीचे ज्वाइन कर सकें और आप सभी को, मुझको, मनीष जी को और जितने भी कलाकार हैं सबको ऐसे सम्मान मिल सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुनील। मैं बताना चाहूँगा रात के 3 बजे तक हम लोग यहाँ पर थे। मेरे भाई थे, मनीष भाई थे, मैं था, राजेश मिश्रा जी थे, रूपम भाई थे, अली भाई थे। हम लोग रात के 3 बजे तक यहाँ सेट को डिजाइन करवा रहे थे, सारी मेहनत कर रहे थे। फिर सवेरे 10 बजे तक भी हम लोग आ गए। इतने मेहनती लोग मेरे साथ में, एक मेहनती टीम मेरे साथ में। मैं चाहता हूँ आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। सृष्टि कुछ कहना है? सृष्टि कुछ कहना है? कांग्रेचुलेशन तिवारी जी। ये होता है प्यार, ये होती है मोहब्बत। नेक्स्ट अवार्ड प्लीज हम सभी साइड। ये थे हमारे बेस्ट विलन विनर सुनील तिवारी जी, माँ डरे माया माँ। उनके बारे में बताना चाहेंगे, बहुत सी मूवी हुई है, कारी करण, हीरो नंबर 1 बोला अपन घर में रख ली। और अब बढ़ते आगे की ओर। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर और इनका नॉमिनीज हैं आपको नॉमिनी कर सका। सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक, डेब्यू निर्देशक जिसे हम लोग हमारी फिल्मी भाषा में कहते हैं, आइए करण भाई। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर मनीष मानिकपुरी जी, मां डारे माया। मनीष मानिकपुरी जी, फिल्म मां डारे माया। उसके बाद मनीष भाई ने एक छत्तीसगढ़ी पहली फिल्म बनाई मां डारे माया, और बहुत अच्छी फिल्म आपने बनाई थी मनीष भाई, हम सभी आपको सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं झांझर की पूरी आयोजन समिति का, योगेश भैया का, जिन्होंने इतना प्यार दिया, प्रोत्साहित किया जीवन में कुछ करने के लिए, और इस फिल्म को बनाते समय भी बहुत साथ दिया उन्होंने, बैक स्टेज भी गजेंद्र अंकल जिन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, सबका सहयोग था मेरे साथ। थैंक यू सो मच।
थैंक यू मनीष भाई, आप ऐसे अच्छे फिल्म बनाते रहे और हम लोग को बड़ा बड़ा रोल देते रहे, अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। ये मुझे बहुत छोटा सा रोल दिया था इसलिए महाभारत में। अभी हम कुछ हमारे साथियों को सम्मानित करना चाहते हैं। ऐसे हमारे साथी हैं माई एड एजेंसी, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में हमें भरपूर सहयोग किया है। इनके साथ ही हमारे श्री नीरज शर्मा जी, श्री संदीप सिंह सीकरवाल जी, इन्हें हम मंच से सम्मानित करना चाहते हैं। प्लीज माई एड एजेंसी के श्री नीरज शर्मा जी और संदीप सिंह सीकरवाल जी मंच पर आए, उनके अवार्ड लेकर के आए प्लीज। इसी के क्रम में हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट डायरेक्टर, जिसके नॉमिनी है उत्तम तिवारी जी फॉर लव लेटर। लड़की के रोना, माँ की बेचैनी और मासूम May I have the honor, please? एंकरिंग करते हैं, एंकरिंग को लेते हो कि नहीं लेते हो? लेते हैं ना, मार रहे हो ना, गुड। लघु भाई आइए, लघु भाई नीचे आइए प्लीज। हमारे निर्माता लघु भाई हमारे बीच है, बहुत सारी फिल्मों के निर्माता है। रंग मंदिर का ये बेस्ट अवार्ड मिलता है श्री सती जैन जी को। बहुत बहुत सती देवी को।
अपना सलीम अली भाई को, अनुपम भैया को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार ऐसा आयोजन पहली बार हुआ छत्तीसगढ़ में। इसके लिए मैं चाहता हूँ आपसे जोरदार तालियां बजाएं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा समारोह है। इनके लिए फिर से इनकी पूरी टीम को, इनकी जूरी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड होता है, वो अवार्ड जो होता है वो डायरेक्टर का नहीं होता, उसकी टीम का होता है। तो मैं अपनी पूरी टीम को, मेरे पूरे कलाकारों को, मेरे पूरे टेक्नीशियन को और मेरे खास करके मेरे प्रोड्यूसर को, छोटे राजी को, सबको, हाँ दिलीप भाई आपको भी, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आप सबके वजह से संभव हुआ है। और पहले भी आप सबका प्यार, आप सबका दुलार मुझे बहुत मिला, मेरे टेक्नीशियनों का खास करके और मेरे कलाकारों का। मैं सबको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much. Please, thank you very much. Thank you. सोहेल भाई मेरे दोस्त हैं, हम लोगों ने सन 2002 में एक फिल्म साथ में करी थी। 2001 में दोनों ने फिल्म करी थी। चाहता हूँ मेरे पुराने साथी के दोस्त हैं, अपनी बात आज इस कार्यक्रम के विषय में रखें। थैंक यू योगेश भाई। जैसे कि मेरे डियर फ्रेंड हैं योगेश भाई, हम लोगों ने साथ में मेहनत फिल्म की थी उन्होंने, और उस वक्त से याराना है योगेश भाई के साथ, और मेरे डार्लिंग फ्रेंड है बहुत, और ये सबसे अच्छे इंसान हैं और लोगों को जोड़ के रखते हैं सबको, और इनको और इनकी टीम को मुझे साधुवाद है, धन्यवाद है कि मुझे यहाँ बुलाया और शुभकामनाएं बताई। और मैं इतना बड़ा भव्य जो है फंक्शन, ये मैंने इमेजिन किया था कि इतना भव्य फंक्शन होगा, और आपकी टीम को रातों साधुवाद है। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, यार एक पत्थर तो जरा कभी से उछाल। और योगेश भाई ने काम किया है। मुझे मुंबई के जो फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, आईफा अवार्ड होते हैं, उसकी झलक मिल रही है, और इंशाल्लाह ये काम योगेश भाई आगे ले जाएंगे और इस इंडस्ट्री को और आगे ले जाएंगे, और ऐसे ही अवार्ड फंक्शन करते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं, बधाइयां, साधुवाद आपको, आपकी टीम को। थैंक यू। मैं दीपक आनंद जी को मंच पर बुलाना चाहता हूँ, विजय मिश्रा जी को मंच पर बुलाना चाहता हूँ, प्रदीप भाई को मंच पर बुलाना चाहता हूँ, प्रदीप दादा और कुणाल हमारा बेटा मंच पर बुलाना चाहता हूँ। प्रदीप दादा मेरे गुरुजी हैं, मैंने इनसे म्यूजिक सीखा है, ड्रम सीखा है। जब मैं जॉज सेट सीखना चाहता था तो प्रदीप दादा के पास गया कि मुझे जॉज सेट सिखा दीजिए, और इन्होंने मुझे जॉज सेट सिखाया। कुणाल हमारे बीच है, युवा कलाकार है, इस जीवन में आगे बढ़ने का बहुत जज्बा है, एक्टिंग करना चाहता है। आप सभी से मैं चाहता हूँ कि युवा कलाकार को आप सभी परखे, जांचे, अवसर दें। कुणाल हमारे बीच है, प्लीज मंच पे है, दीपक भैया मंच पे है, और जय भाई मंच पे आए, प्लीज सोनकर जी मंच पे आए, प्रदीप भाई हमारे मंच पे आए, और हमारी टीम के सभी सदस्य को हम सम्मानित करना चाहते हैं। मोहित साहू जी मंच पर आए। जयेश भाई वेलकम। हमारी कुछ छोटी सी तैयारी है, थोड़ा सा समय आपसे लेते हैं। एक हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म की हीरोइन है रश्मि, उनका
बेहतरीन चला था यार लाइव चलो ना यार खैर ज़्यादा टाइम नहीं है टेंशन सभी अतिथियों से चाहता हूँ मंच पे आए। आइए दीपक आनंद जी, प्रदीप दादा, मैं सबसे पहले से चाहता हूँ कि मंच में आए। मनोज वर्मा जी से आगे मंच में आए। गुलशन देवांगन जी से आग्रह है मंच पर आए और ये सम्मान लेकर के जाए। गुलशन देवांगन जी यूट्यूब में काम करते हैं। गुलशन देवांगन जी, उमेश शर्मा जी, सीजी फिल्म्स उमेश शर्मा जी, हमारे सबसे बेहतरीन प्यारे भाई जो हमारी फिल्मों का पूरे देश में प्रचार प्रसार करते हैं, हमारी फिल्मों को नाम दिलाते हैं, हमारे इस अवार्ड के लिए उन्होंने काफी मेहनत करी है। ऐसे हमारे भाई दिलीप राम पल्लीवाल जी जो हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में पियानो है, दिलीप राम पल्लीवाल जो
इनके 20 लाख फॉलोअर थे, 20 लाख इनके फॉलोअर थे और आज इंस्टाग्राम में 3 लाख से ज्यादा इनके फॉलोअर हैं। हमारे छोटे भाई हैं, 2 लाख इनके फॉलोअर हैं। ऐसे देव वैष्णव बेहतरीन कलाकार हैं, एल्बम कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, हमारी टीम के सदस्य हैं, हम इन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। भाई देव वैष्णव हमारी टीम के एक और सदस्य जो आज पूरे बैक स्टेज संभाल रही थी, सारे परफॉर्मेंस की तैयारी कर रही थी, एकता पंसारी मशहूर नृत्यांगना है, छत्तीसगढ़ की बेहतरीन कथक डांसर है। गणेश प्रस्तुत की हमारे एंकर भाई, इवेंट ऑर्गेनाइजर और हमारे सहयोगी भजन गायक भाई जेपी शर्मा। जेपी शर्मा हमारे प्रमुख सहयोगी हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, पग पग पर हमारे साथ रहते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी का कार्यक्रम पूरा यही करवाते आ रहे हैं पिछले 15 सालों से, मेरे छोटे भाई जेपी शर्मा। हमारे एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी जो पिछले 9 वर्षों से इस अवार्ड को हमारे साथ करते आ रही है, केसर सोनकर से आग्रह है, कृपया केसर सोनकर मंच पर आए। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी केसर सोनकर। हमारी टीम के सदस्य भाई रॉकी दासवानी, आप इतनी मधुर आवाज जो मंच पर सुन रहे हैं, हमारी एंकर नुपुर जो सारे शो को एंकरिंग कर रही है, हम नुपुर को सम्मानित करना चाहते हैं। दीपक आनंद और पूरी टीम, देखिए तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हमारी टीम है जिसने पूरे शो को ऑर्गेनाइज किया है। भाई मनीष मानिकपुरी, जितना आपने म्यूजिक इफेक्ट सारा देखा है, सारे म्यूजिक सबके रचयिता भाई मनीष मानिकपुरी। ये अवार्ड आपको टीम पता है, मनीष मानिकपुरी। हमारे सबसे बेहतरीन साथी, जब हमने इस अवार्ड करने की सोची तो मैंने कहा भाई ये अवार्ड अपने को करना है और तुमको कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। उस भाई ने कहा योगेश भाई आप आगे बढ़ जाओ, पीछे मुड़ के बाद देखना मैं आपके साथ खड़ा हूं। और उसने बेहतरीन एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में 700 से ज्यादा लोगों को जोड़ा और 1,500 से ज्यादा कलाकारों का पोस्टर बनाया और इस अवार्ड में इतना मंथन लगा दिया, पूरे 1 महीने से ज्यादा से अपनी दुकान छोड़ दी। ऐसे मेरे भाई शेख अलीम बंसी, मैं चाहता हूं शेख अलीम बंसी का अभिनंदन हम सभी करें जोरदार तालियों से। तालियों में कृपया करके कमी ना करें, क्योंकि जो अवार्ड आज हम कर रहे हैं, जो हो रही है मूवमेंट, ये मूवमेंट देखने को ही नसीब इस टीम वर्क से है। तो प्लीज एक बार जोरदार तालियां हमारी पूरी टीम के लिए। ऐसे हमारे साथी जो शुरुआत से हमारे साथ इस अवार्ड में शामिल रहे, पूरे अवार्ड की व्यवस्था करना, सारी व्यवस्था करना, आज बैक स्टेज पर सारे अवार्ड की पूरी व्यवस्था करने वाले और पग पग पर हमारा साथ देने वाले और आज इस शो को अपने चैनल से लाइव कर रहे हैं, ऐसे हमारे भाई पुनीत सोनकर जी, भाई पुनीत सोनकर जी, भाई पुनीत सोनकर जी। पुनीत भाई हमारे बहुत सहयोगी हैं, कई वर्षों से हमारे साथ अवार्ड में जुड़े हैं, भाई पुनीत सोनकर जी। पुनीत भाई विचार व्यक्त करें। धन्यवाद अशोक युगल जी। आप मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो के बोला कि ये 13 वर्ष पहले जो अवार्ड की शुरुआत हुई से छालीवुड स्टार्टअप जे अवार्ड के करता धरता बड़ी वो छोटी बात
बात पूरी सोसाइटी से जब 3.5 लाख रुपए खर्चा करके बाद शुरुआत करी, आज भी बैंक को संभाला था योगेश भैया का आशीर्वाद से। उम्मीद से कि मैं पहली आगे उस समय मांग में रहता हूँ, मगर भैया का आशीर्वाद लास्ट में रही से। ऐसा जो टीम है ना, टीम को मंच पे नहीं बुला सकते क्योंकि आपके पास बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। आप उस जिम्मेदारी को वहां निभा रहे थे, मंच पे आते तो उस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते और अवार्ड गड़बड़ा जाता। सारे अवार्ड को संभाला है पुनीत सोनकर जी ने और केसर सोनकर जी ने, दोनों ने मंच के पीछे रह करके सारी व्यवस्थाएं 200 से ज्यादा सम्मान ऐसे हमने बनाए हैं और 50 अवार्ड 250 अवार्ड की पूरी व्यवस्था पुनीत भाई और केसर सोनकर ने, केसर इन दोनों ने इस अवार्ड की व्यवस्था की। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से दोनों हमारे पुनीत और केसर का अभिनंदन करें। विनीता सोनकर ये भी हमारी बहुत सहयोगी है, जिस अवार्ड में उनके सलाह हमने दी। विनीता सोनकर मिसेस इंडिया रह चुकी है और वो आज हमारे बीच है। विनीता सोनकर, तीनों सोनकर मंच पर कब्जा कर लिए। हमारा भोजन विभाग संभाल रहे हमारे साथी, जो चाय पानी व्यवस्था सारा पूरा भोजन विभाग हमारे देखने वाले, हर प्रोग्राम हमारा भोजन विभाग संभालते। ऐसे हमारे साथी भाई संतोष परमार जी को हम सम्मानित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी टीम के जितने लोग सब अंदर आ गए एक बार व्यवस्थाओं से। भाई संतोष परमार जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे पत्रकार साथी जिनकी सलाह अवार्ड की विचार हमारे तरफ से मन में आए, वो हमेशा हमें सलाह देते रहते हैं। आजकल उन्होंने बहुत अच्छा नया कॉलम भी शुरू किया है और उनके कॉलम को हम लोग पढ़ करके उनकी सलाह को अमल करते हैं। और बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बड़ी पत्रकार है, फिल्मों पे बहुत पैनी नजर उनकी रहती है। ऐसे हमारे साथी भाई पत्रिका के भाई ताबीर हुसैन जी, पत्रिका के वरिष्ठ संवाददाता भाई ताबीर हुसैन जी। हमारे एंकर जिन्हें आप सुन रहे हैं, एक एंकर हमारी थी नुपुर जी और दूसरी एंकर हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्मों की स्टार है। लगभग अनगिनत फिल्में की है, अनगिनत एल्बम किया है। मैंने भी उनके साथ में फिल्म और एल्बम की है। ऐसी हमारी हीरोइन और आजकल मुंबई में बहुत सारे सीरियल और वेब सीरीज कर रही है। स्पेशल इस शो के लिए वो कल भी मुंबई से आई है हमारी शोभिता श्रीवास्तव जी। शोभिता श्रीवास्तव हमारे विशेष सहयोगी भाई दर्शन सिंह जी जो झारसुगड़ा से हमारे बीच आए हैं आज के इस अवार्ड के लिए। हर कार्यक्रम में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देते हैं। प्रदीप दादा आइए ना, हमारे गुरु जी हैं प्रदीप दादा, उड़ान उनका बेटा। मैं क्या कहूँ, एक मेरे साथी जब अवार्ड का विचार मन में आया तो सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम मेरे मन में आया कि भाई आपको तो मेरे साथ रहना पड़ेगा। हमें एक पत्रिका निकालनी है, उस पत्रिका का संपादन आपको करना पड़ेगा और सारे अवार्ड की व्यवस्था हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के करनी पड़ेगी। और पग पग पर मेरे साथ रहे, हमारी टीम के साथ रहे। कल रात को भी 3 बजे तक वो हमारे साथ थे और पिछले 1 हफ्ते से रोज रात को 3-4 बजे तक हम लोग साथ में बैठ कर इस अवार्ड की उनकी तैयारी कर रहे थे। ऐसे मेरे साथी भाई अनुपम वर्मा जी जो हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्मों के डायरेक्टर हैं, कई सारी फिल्में उन्होंने बनाई है, वो कवि हृदय है, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। भाई अनुपम वर्मा जी को हम सम्मानित करना चाहते हैं।
अवार्ड करना है और ऐसा अवार्ड करना है कि सारे कलाकार, सारे टेक्नीशियन, सारी टीम, प्रोडक्शन यूनिट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो हीरोइन, सारे के सारे को एक मंच के उसमें लेके आना, नीचे लेके आना है। और उसी सोच से जब योगी जी ने